मैंने PowerPoint very short class start होने वाला your progression. Please continue. Good evening, everyone. This is Jackson Wilson, and I'm here to give a presentation on capital markets. And I would like that this session should be interactive as well, so that we can have your questions regarding the capital market. First, I'll give you a brief introduction of capital markets and the overall structure of the capital market in Pakistan, and what are the structural reforms and other things that are being have been transformed over the period of years, and what are the upcoming areas of the capital market. Okay, there are these areas. Okay. First, we'll check these topics: introduction of capital market ecosystem, introduction to SECP, our regulatory approach, regulatory framework, and the securities market statistics, and the understanding of transaction cycle. I think this would be interesting for most of the people, because normally people are not aware all the transaction flows in this market and what are the constituents who are the participants in this market. So, and what are the major threats? Then we'll be discussing the major threats and risks in this market, and what are the manipulative schemes, and what are the ways where one investor can be defrauded. And then we'll see the investor protection measures that are available through CDC, through NCCPL, through the regulations, through the regulatory framework, and then the structural transformation, the approved financial products that are available in the market, and what are the key challenges. So first of all, since all are finance students, so if a business is being set up, it needs some funds. Assets are being financed either by equity or by debt. Like debt is they are stakeholders outside the company, and owner investment is equity, and non-owner investment is the debt investment, debt financing. So in order to get the funds from the market, he has two options: either to issue his shares to the public, or he should borrow funds from the public in the form of debt instrument, either from equity instrument or from debt instrument. There are two types of, in financial market, there are two types of markets: one for long term and one for short term. The long term, where you want to raise capital for the long term purpose, that those markets are being called as capital markets. And for short term financing, those are money markets. There are few instruments are shown over here, like T-bills, commercial paper, certificates of deposits. These are short terms. And the debt instruments that are long-term in nature, the TFC, Sukuks, and VIBs. And for equity instruments, there are ordinary shares and preference shares. Next, under capital market, equity is being raised. Like if you want to raise your funds from the public, there are further two markets: the primary market and the secondary market. Primary market, where you get the funds directly from the investors, and secondary market, where those instruments can be traded or exchanged. Like for equity instruments, these are through offered shares through IPOs and FPOs. FPOs are like secondary or public offering. And there are two methods currently being adopted and being used in the market. These are fixed price or book building. In book building, there is a process where there is a more price discovery rather than a fixed price. Next is the secondary market. Secondary market is what is your stock exchange, where you use to trade stocks. You buy and sell shares and securities, right? And it is being in stock exchange. The platform it has provided, it is through CATS. It's Karachi Automated Trading System. So its abbreviation is CATS. And for the debt instruments,
The primary issue is IPOs or private placements, and secondly, in the secondary market, it's over the counter or through it's a batch system, bonds automated trading system. It's provided where the bonds are traded. It's FPUs follow on public offering. It's a secondary public offering. Same words. After IPO. After IPO, this OGDC has done it. Like initially, it has given the first time it gives its IPO, and second time New issue. yeah, for when it divests its existing shares to the public, the OGDC did it. When it divests and since it was being the shares are being held by the government or any person, and when he divests his shares, he goes into the market, and then he sells those through a secondary offering. Next, about the ecosystem of our capital market. Like SECP is the apex regulator, and there are three SROs, self-regulatory organizations: CDC, PSX, and NCCPL. And the brokers, the participants, they through them you can trade. When individual investors can trade, or the institution investors can trade through brokers, and they use a platform that is being provided by the stock exchange or the commodity exchange. Like in the commodity exchange is PMEX, you might have heard it, Pakistan Mercantile Exchange. So that is where the commodities are traded, and the shares and bonds are traded at stock exchange. So commodities exchange are also regulated by Yes, all. Okay, this is a brief introduction that it was set up in pursuance of 1997 Pakistan SECP Act, and the main that act gives the power of regulation of corporate and capital markets, supervision of insurance, supervision and regulation of non-banking finance, as well as it also includes the responsibility, or you can say oversighting responsibility of other profession like rating agencies or legal advisors. They have issued the legal advisors as well. For legal advisors, the framework for legal advisors, who has to appoint it, and for research analysts as well. There are regulations with respect to those research analysts as well. So the entire vision and mission and the overall activities are to provide a conducive capital formation, a market where capital formation activities are being run, and people can easily trade, or they have their investors' interest and their investments are protected through regulations, or the financial products that are being offered to them were also approved. SECP used to approve those products so that they have the investor interest and protection in them, so that those products cannot be used for manipulation. Okay, this is in the broader mode. It's the vision, right? The development of modern and efficient corporate sector and capital market based on sound regulatory principles, and provide impetus for high economic growth and foster harmony in the country. And about the mission, it's like I have marked them bold: fair, efficient, and transparent. And other two objectives, that is protection of investors and mitigation of systematic risk, and robust corporate sector and broad-based capital. Like if I define it or summarize this into very brief, it deals with protection of investor interest and with capital formation in the country, right? Because and about the mitigation of systematic risk. Systematic risk is what is the market risk, right? There are certain mitigants to it, like how strong your system is. Like when on the next slide, when we'll be moving to NCCPL as well. So NCCPL is, I'll just give a briefer to it. That NCCPL, it deals with the clearing and settlement, and if something happens to it, it will crush the entire market. Same case with CDC.
if something happens to CDC, because CDC is holding the securities. So if something happens to their system, then it will be a systematic risk to the market. So which will disturb the entire market. Systematic risk is something which will disturb the entire market. Okay, so we talk about the protection of investors and why it is necessary, because there are corporates who use corporate wheel, like they said that we are being registered with SECP and they do the deposit taking and other activities which are not, or they do not have the license, but they do so. So in that case, there are certain schemes you might have heard. Some schemes are coming, they are giving extraordinary returns, 100% guarantee payback, and all that. So they use the corporate wheel and they do fraudulent activities and defraud the public at large. So SECP has to work out along with SROs to implement such regulation, such measures, and such awareness to protect the investors from such actions and activities or get indulged in those activities. I have a question here. Yes. So what SACP has practically done to stop people from making such companies and defraud people? There are very many things that have been done. I'll do it. Do ask me in the later session so that you just note those questions. Sure. And I'll answer it. Sure. Because we'll be covering the different things at different times. Okay. Then the capital formation. Capital formation. There are certain initiatives that has been taken by the SECP, like reduction in SECP monitoring fee, the revision of tariffs and structures. There is a reduction in extra margins and liquidity margins. These are being collected by NCCPL, but now there's a reduction in that. And there is an increase in margin eligible securities. Okay, what are margin eligible securities? The question is this. Okay, margin eligible securities are those securities which allow you, or you can say those are being allowed to be deposited as a margin for trading purpose. Okay, those are called margin eligible securities. Like if you say I have all the securities and I can put them I can deposit that as my margin for trading, but those will be not, all securities will not be allowed. There are certain scripts that are allowed to be considered as margin eligible securities for the purpose of keeping the margin, fulfilling the requirement of the margin. Okay, there are certain other things like increase the eligible forms of collateral, like base minimum capital. There is an enhancement in circuit breaker, and there is also introduction of 4% changing. Like you might recently have heard that stock exchange was about to be it was near to be get halted, but that was not happened because it requires that 4% requires to, the condition will be met only when there will be a continuously decline of 4% for 5 minutes. Then it will activate and the market will be halted for 45. And there are simplified licensing regimes as well. So on simplification and ease of doing business, SECP is doing a lot of work. Ease of doing business, digitalization, and so that the capital formation activities should be like it will get a pace, so that since if I talk about the entire economy, we are in the process of transformation. We are transforming into more digitalization, and the economy is transforming. So there are certain. Sorry. Yes. Why crowdfunding is not being allowed in Pakistan? I just mentioned that you are taking measures to allow digitalization and all those two measures. Why crowdfunding? Crowdfunding, there is a concept, and there are some I think guidelines have been issued as well. There is a concept of in addition to that crowdfunding, just one thing more, that there is a concept of sandbox as well. So sandbox is where the financial ideas can be put in and they can be reviewed
so that whether that financial product is visible for the market or not, that SECP is working on that. And about crowdfunding, there are certain, I think, there are guidelines and it is in the process. It's not allowed. I mean, it's not allowed. It will be allowed because crowdfunding is something you are taking the deposits. So deposit taking is itself becomes it's a licensed activity. So it has to be regulated, and so certain regulations has to be there. Certain participants and should be allowed to do that. There are certain those criteria needs to be developed. Then this product will come up. Aren't they already so great for that? You can say it's not we are late, but because there are certain other elements that needs to be kept in front as well. Like since you might have heard the FATF issue. Like there is a lot of things that are going on because especially the deposit side, it becomes very risky. So there is need to have a very much like concise and uh, regulated, this is a very regulated area where there needs to be regulations that, because in that crowdfunding, there are different members will be funding that thing, right? So state in America, crowdfunding is not even being regulated. People are investing at their own risk and they know the risk of investing in a company like that. But There are very many companies that have already did things like this and defrauded and looted billions of rupees in Pakistan. You might have heard recently, if I'm not wrong, there are few companies, around 7 to 8 companies that are being mentioned on the SECP website as well on the public notice that these are taking public deposits and illegal. Because there is no, then if they have looted, then people will come to SECP that why we are being defrauded. So the reason and why we are giving this presentation, me and Oves is here, is to get you or people like more aware about what products are the approved products and what are the ways or what are the spheres where you can invest, what are the areas where you can invest legally, so that you will have a protection as well. Okay, this is the regulatory approach, like I have already discussed this, ease of doing with the regulatory, reducing regulatory burden in the form of licensing, ease of simplifying licensing requirements and reduction in fees and all that. Consultative rule making approach. It's like whenever there are some regulations or their drafts are being issued for public comments and then it's being finalized after taking those consideration of those public comments. Efficiency and effectiveness through digitization. We have already discussed it, and zero tolerance for market manipulation and abuses. Okay, market manipulation and abuses is something like the people used to manipulate the market through fake trading volumes, or there is a pumping and dumping. Pumping and dumping is like you buy the script, you start buying the script and then pumping its price so that price is inflated, and later on with the help of there are other things with this element that even it has been in the experience that people use social media to keep the price inflated, and when the desired price is inflated at a certain desired level, then the person who's just doing this activity, they used to offload their position so that a particular they can make a gain on those scripts. Are there any controls put in place? Yes, there are surveillance being done by SECP as well, by PSX as well, and there are cases, and those cases are being adjudicated, and even they have taken to the court as well. a question here. I think it is absolutely illegal. If I have millions of shares and I want to dump that at lower cost, how can SEC stop me from doing that? No, it's not like you are buying it and selling it. What you are saying, what the pumping and dumping is, it's an unfair and unethical practice. It's not like you are making a rumor in the market that this price
will move to, for suppose, from 7 to 12 rupees. Okay, you have the position. You have the position when you buy it at a lower cost, and now you are just spreading the rumor that it has, like, for suppose it has gone into this project or that project, and its EPS will go up, and this will provide more than previous year dividends. So things like that, you're spreading false news and then offloading it. So I'm not talking about the false news thing. I'm talking about. If there is a real economic activity being done by the company, that economic activity and benefits are already translated into the price, which is known to the entire market. Also being used to manipulate the market. The bigger players who are 4, 5, 6 players in the market, they are manipulating the market every single day with the same technique. They put billions of shares on sale, and the share prices go down. And on the other hand, when the share prices are going down, they put millions of shares on demand. The share prices go up. The small investors aren't able to buy any share because the system is active. First, they have to purchase all the shares, and then if there's already a demand on the portal, they will be getting the shares first, and then it will be my turn to get the shares. So they are manipulating the market every single day. It's not that easy. It's not that much easy. That what you are saying, that if I can buy and sell this huge quantity and there nothing will happen. Like there is a separate market. If I have to buy a very big chunk of the shares, then there is a separate market. It's a NDM, negotiated deal market. Then it has to be done in that market so that the market prices are not disturbed. What Jason is trying to say is, what is not allowed is manipulation. If you are buying a security because you like it, and eventually the prices go up, and now you are starting to sell off, it is fine. As long as you have not manipulated what we are. Have buying power to manipulate the market. No, see, you have the buying power, but if you are not inciting rumors, it's fine. You have the buying power, you can buy whatever you feel like. And it is your wish to sell it whenever you feel like. So it is not prohibited, right? So what is illegal or what is prohibited is manipulation and abuse of the market. This is what is. Like you have two accounts. I'll just sum up with this. You have two accounts, and with those two accounts, you are buying and selling and creating an artificial volume of that script. Like this is abuse. Like you are holding the two accounts, you are buying, selling, and just creating an artificial impression in the market. Okay, there is this script is particularly gaining a particular volume. It's on momentum. So there are certain practices. Those are used for manipulating the entire market, because doing these things will be unethically and unfairly treating the others and compromising the transparency and fairness of the entire capital market. Okay, about the regulatory framework, like there is a Securities Act for this particular market, Securities Act, Future Markets Act, Securities Broker Operation, Licensing and Regulation, Future Broker Operation and Licensing Regulations. Like these are acts, and for PSX there's a rule book, and for CDC it was incorporated through an act. It is regulated by a CDC Act, and there are regulations as well which are governing the entire operations of CDC. Then the NCCPL regulations, and they also issue notices and circulars time by time. And then about the PMEX, there are general regulations. PMEX is being governed, it's governing act is Future Market Act. And there are different other regulations. As you can see, market making regulation, system audit, branch authorized person registration, PMEX code of conduct. Like this is the same. Okay. There are certain statistics that I would like to share with you. So today there are 203 active brokerage houses, and the active UINs there are around 2 to 6,000, and sub accounts with CDC are 200 around 243,000.
And total listed companies there as on June 30th, 2019 is 534. And the total listed securities is 575, including preference shares and 30 TFCs. The market capitalization is 43 billion. It was also October 31st, I think was the date. And the asset under custody of mutual fund is around $4.5 million. Market capitalization to GDP ratio is 18%. It has been declined from the level of 2017. And they're just for you people, just to get more knowledge, if you want to go at home and just Google something else as well for what are the indicators to assess the market. There's a Buffett indicator. You can just search it out, and because it gives you, according to Warren Buffett, it's a single parameter which defines the over valuation or undervaluation of the market. I just mention it for you to, if you want to go home and just search it out. Okay, let's talk about the understanding the transaction cycle. How the investor invest into the market. Every investor, either it's an institution or individual, they have to go through the securities broker, and then only through going or opening an account with the security broker, they can trade on the platform of trading platform of Karachi, Pakistan Stock Exchange, the CATS. Okay, I'll just discuss the few things over here. Like when you open an account, the KYC CDD is being done by the broker, and they'll require you to fill a standardized form. There's also one more Sahulat account opening form that is it's also a step towards to get more investors into the market. And there's a registration process. Then once you get into you open an account with broker, you go to the broker, he'll ask for an account opening form so that he can maintain your account. Then he sends that information and require you to fill an information regarding CDC. There will be, he is the broker, because broker, the house is considered to be it's the main account, and then all those clients which are coming to him are being treated as sub accounts. So with CDC, there is a participant ID and there are sub accounts. So broker is the participant and all other investors are sub accounts. So, and then there will be registration with NCCPL. The UIN of the investor is being registered with the National Clearing and Clearing Company of Pakistan, NCCPL. It will be registered with that as well, so that the settlement, all your cash settlement, you deposit in the current scenario, you deposit the cash with the broker, and then when you trade, your trades are being settled through NCCPL system, and your securities, the securities you have bought or sold, are being handled by CDC. So that's why you have to open an account with CDC as well as with NCCPL. Brokers, because they are allowed to do trading at Pakistan Stock. They are sort of intermediate. They are licensed. They are licensed to do so. If you allow. Okay. Brokers is a generic term. The technical term is trading right entitlement certificate. Trading right. They have the right to trade, not you, because they fall under certain regime. So they are the license holders. So if you want to trade, being an investor, you have to go to the broker or the track holder, enabling you to trade inside the stocks, because they are the track holders. So they are sort of intermediaries, right? Yeah. Investor in the stock market. Yeah. Yes. This is planning to broker and go to the people directly. There's no such concept even in pipeline, and there shouldn't be any, because how can Not being like no, by no means. What about the physical shares? Like Physical shares are not traded. What additional security it brings to a CCP that you are being traded by a broker? This is what I'll tell you in my presentation. I have this. Okay, then the trading flow is like
when an investor goes there, he opens an account, then he places, when he places the order, he places the order to the CATS operator of the broker. CATS operator is who is operating actually the CATS, and then he places that order on the CATS system, and once that order is executed, that will be settled. There is a settlement process of T+2. All orders in the ready market, they are settled at T+2, like transaction plus 2 days. So T+2 formula. So they are settled through clearing of trade by NCCPL in 2 days, as well as settlement of trade, the securities which are in CDC, they are also settled in 2 days. Like after 2 days, you will get, if you have today you have traded, after 2 days your CDC statement will show that trade that you have done. If you have purchased today, after 2 days you will see that purchase in your What about the value? It would be reflected on the date of realization or date of purchase. For example, I buy a stock today, okay, and it appears in my statement after 2 days. So what would be the value in the stock market? For example, today it was 12 rupees and after 2 days it is 14. So what would be the value of my share? Okay, let me clear. Securities are being held by CDC. So the number of shares you have purchased, the number of shares are appearing there, right? Okay. And on the amount at the rate on which you have traded is being settled on the after 2 days by NCCPL. Like NCCPL will send his statement to the broker and say, okay, Mr. X has purchased this amount. He will give a statement, and that it's written how many clients have purchased and sold and sell the shares. For all those, and the net, either there will be a net buy or a net sell position. In case of net sell position, the broker has to receive funds from the NCCPL. In case of net buy, the NCCPL has to pay to the broker has to pay to the NCCPL. And from where broker will pay? Because it's the trade being done by you people. So he will, after 2 days, he will pay the amount that is being, which was traded at that rate. At the time of trading. Right. At the time of That trading. was my question. Like most of you have your curriculum, there is a trade date accounting and there is a settlement date accounting, right? So here in NCCPL and CDC, the settlement, it deals with the settlement. Everything comes account for on the settlement basis. Okay, next is let's talk about the major threats in the market. One is illegal deposit taking. The corporate entities taking deposit from the public and deprive them of their hard-earned money. Second is misappropriation and misuse of assets, like brokers when they are holding, in the current situation, they are holding the investors' money as well as the securities. There are certain models, those are being presented by CDC and NCCPL, they are working. Those are an advancements towards protection of investors' interest. Mr. West will provide on it later on. Market manipulation and market abuses. We just talked about it, but let me explain these as well. Okay. First, illegal deposit taking, as I initially speak about, that there are certain entities that are taking wheel of corporatization. Even there are some businesses that are not corporate, but they said that they are being registered by SECP, or they said they use the name company with them. And people generally think, okay, it's a company. But I think here, like you people, you are all aware of the 3 forms of the business, like sole proprietorship, partnership, and corporate. So SECP regulate all the corporate entities. So this is online portals where I can go and check the name that company already exists or not. Yes, you can go to the SECP website and you can check its link. It's on the face of it. Okay. Because in the UK, we can check everything about the company. They publish accounts.
names for the directors, when they are recruited, it is publicly available. So do you have some kind of issues? There are certain information that will be displayed online. And for further information, if you want the accounts of a private company or something like that, then you have to go to SCCP and ask them. You have to file an application that I need these financial statements or these forms or memorandum. Then they will give you a certificate to go. So it's available. It's available. I think for listed companies it is available on websites. For private limited companies, you have to make a request. Yeah, you have to make a request. Yeah, that's Because since it Since it is a private company. Private In company. the UK, even the private companies are publicly I mean, available. but I would request you not to compare the Pakistani market with the market of the UK or US. We are like, But we have to move forward. yes, but we are not there actually. We are trying, we are striving, but we are not there. So comparing ourselves with use, I mean, in anything except corruption, we are there. So we are striving to move forward, but let's not compare that it is happening in UK. Yes, it must have been happening in UK. There are so many other things that are happening in UK or US that are not happening in Pakistan, and there are certain limitations that we have. So much so that the internet we use here and the internet we use in West, there's a huge difference. This is the basic thing, and this is the thing that everybody is using. So, I mean, for example, the population of Pakistan, we do not have even 0.1% of the population investing in stocks. In China, it is 9%. We don't have even 1.2%. They are 9%. Compare yourself with India, they are 1.5%. They are not even 0.2%. So please, let's be realistic. US is 52%. Maybe, I don't know what, but I just Why is that? because they're just striving to get forward. There are so many things. Did you know about the difference between IS account and sub account? Being a qualified person, if you do not know what is the difference between IS account and sub account, this is the reason. I will tell you one thing in Pakistan. Qualified people who are not accounting or finance savvy people, they don't even know what is stock market, how to profit. This is where. Who the responsibility is it to create that awareness? Why is this session being arranged? You know, being CDC and obviously being a CCP as well, I have my doubt that we have left single business school in Karachi. And We have business schools, they already know about this stuff. What about non-business schools? What about engineering universities? You also need to know this. I mean, let's just focus the right person first. Obviously, everybody is potential investor, but who would be the first person to invest? Would be the business person. Why have you you? have one small thing to allow? Yeah. In the state bank of Pakistan, we are working to create the financial literacy for Pakistan. And we are going to schools now, even to the class, the age 9, 8, 10 people, and we are telling them what to do. We can do the same stuff in the city. You know what? In Pakistan, when we take our child to the grocery or superstore, we'll ask him, please count these tins and these tins and add them up. This is what we do. And same age guy, if you take the Israeli person, the parent would ask, please make the feasibility of this plan. This is where we are. Let's face the reality. Stop comparing yourself with the US and UK. So what is the action plan to improve? It's a multiple effect. Being him, being SCCP, myself being the CDC representative, we are just small fractions of the entire ecosystem. Ecosystem is much larger. You are a part of it. No, we are not. RTP is a part of it. Not exactly part of government, but it is an institution. It is an institution. It is a government institution. SCP is managed by government. It's a government institution. It's a autonomous. It's a regulator. Just like It has a charter from government, from parliament. of course, even the university has a charter of government, so it does not become a government organization. Having a charter, having an authority is different thing. And in your mind, it's the responsibility of us members, accountants as well to spread the awareness. Not only the institutions,
But we accountants also have to encourage our engineers or medical How many ACC aspirants do you have in Pakistan? Why less? affiliates. More than 10,000. 10,000. And what about current students? Only 66 were registered here to get this knowledge. Why? I think Free of cost. people assume that this is not already have studied. See, I don't think like there are that. so many things that you Absolutely. many people do. So we all are to be blamed for one thing that we are not progressing forward. We all are to be blamed, including myself, including every institution. So yes, we inshallah will, but let's face the reality. Actually, currently we are not. Okay, I would like to know what is the actual number of students in Pakistan for ACC. I don't represent ACC, so I have no bloody idea what the count of students is. Okay, let's come back to it. Yeah. Okay, about illegal deposit taking, like only those entities can take deposits from the public which have a license and which are licensed to do so, like NBFCs and insurance companies, like they get the license and to get the premiums, to get the investment from the people. So, and as well as security brokers, they are also taking deposits. Okay, next is misappropriation of assets. Like when you invest in the capital market, currently your securities are under the sub account, are in the sub account of a broker, and your funds are also with the broker's bank account, although it is titled as client bank account. Right? So there is a possibility for fulfilling his own liabilities. He take funds out of that client bank account and use it for his own purpose, or finances other functions, his own purchases, and then once he get it, and then replenish it afterwards. In that case, he has misused your funds, right? He might have used it other ways and then take benefit of it, and since you have not done any trading, he knows you are not an active trader, so he utilized your funds even for a day as well. He can do it. Second is like where how securities are misused. They are being your securities after taking a pledge from you. They can pledge it with a bank and taking the financing against your securities. Okay, you do so. The biggest risk is here because they used to if they can pledge, although CBC has taken steps towards it, so that risk has been reducing. But in the previously, this area has been very much misused by the brokers. Okay, about market manipulation, insider trading comes under that. Like if you have some knowledge, the company CFO, he knows that certain project is there's a certain project is going to be carried on by the company, or there are certain assignment it's going to be fulfilled, or there's certain penalty that is going to be imposed and it will reduce its EPS. So either way, he can trade in the shares through that knowledge, which is of material, having a material impact. It's the material information, and and it is non-public information. So there he is getting edge. Is the CFO allowed to purchase own shares of own? They are he's not allowed, because if he do so, it will come into the knowledge of either of the regulator or through surveillance and all that. And and historically people try to do so, and when it comes to light, they are being penalized for that. But this can be done through families or friends. Yeah. This is what insider trading is all about. This is what insider trading is. Close relatives. I think it is not going to. I think It can, but yeah. top management cannot be purchased any share at the time of listing or at the time of dividend. There's a blackout period. This time cannot be further. It can be by and it just can show disclosure in accounting according to IS 24 and different standards. That's related party. Okay, then is inducing investment through misleading information that we have already talked about. Okay, let's go to the next slide. So investor protection measures. IS account, CDC, direct settlement account
There is a NCS as well. Like when Mr. West will explain, you see this direct settlement services. It's a similar model adopted by National Clearing Company. And there is for NCCPL about they have around 3.6 billion in the settlement guarantee fund in case of any systematic risk or there comes something like abrupt outflow of foreign investment from the market, or there are certain market crash situation where they can just settle those liabilities. A commodity market in the PMEX, there is a direct fund model. Like you can directly invest, or you can just place your funds with PMEX and then you can trade. So there's the broker where initially you have to place your funds with the broker and then they move it to the PMEX account. Now you can directly place your funds with the PMEX. And what? Pakistan Mercantile Exchange. And what about the investor account services? That is what I He will explain. Okay, there are certain products in the market currently. It's in ready market, there's a spot market where all the transactions, day-to-day trading of this buying and selling of the shares. Then comes the derivative market. In derivative market, we have DFCs, CSF, SIF, although only DFC is currently being traded. And for equity leverage products, there is a margin trading, margin financing, SLB, and Murabba share financing. That it's a recent Islamic product that has been introduced. Okay, about margin trading, I'll just explain it because I've already taken much time, so I just have to rush up. Margin trading is something if you want to do trading and you want financing from anyone, like you go to like it's something you don't know the other party who is financing you. Okay, there is margin financing, which is in-house financing, and margin trading is you go to that platform, you just search who is going to finance my trade. Like 15, if it's 100 rupees, for example, 15 you have to invest 50 rupees, that is financing participation ratio, FPR. You have to have 15 rupees to buy 100 rupees shares, and that 85 is being financed, its settlement being financed by any person who has financed that, the financer. It's a bit complex, but so I'm moving forward because of the time. And there is a new product, regulations are in place, exchange traded funds, and the things are towards. Still, it's in pipeline. No, two funds will be launched most probably next week. Next week, okay. One will be there, yes. Yeah, you get in it. Okay, and just about structural transformation, just I'll give a brief to it. Like most of you might be aware that previously it was Karachi Stock Exchange Guarantee Limited. Now it has been demutualized, corporatized, and integrated through Demutualization Act. It was Act 2012, and it has been demutualized. Mean that Wes has already told you. There now brokers are the trading rights and the ownership of the stock exchange. It has been segregated. It has been separated through this act. In nutshell. Okay. Previously there are Lahore Stock Exchange, Islamabad Stock Exchange. Now there is only one, Pakistan Stock Exchange. Okay, there is a new regime, brokers new regime. It's upcoming thing that it will structurally transform the entire brokerage industry, because I'll just tell you what they are and what they will be. Okay, there are three categories in that: trading only, trading and self-clearing, and trading and clearing. Trading only, like now, since there are custody issues, and previously the defaults have been taken from the custody perspective, because brokers do have the custody of the shares in their participant under their participant ID. They have the sub accounts and they have a right to move the shares.
since they are dealing with their the participant ID and the sub accounts are under it, they are so they can use for even it is not so easy to use it because there has to be a order for placement and all that, but they can manipulate with that custody as well. So in order to remove that custody from those brokers which do not have a good sound base, capital base, this model has been uh, introduced so that trading only means they will trade only their own or clients will or the clients trade they will only provide a trading to them, trading service only. And trading and self trading is the next step. What is currently brokers are doing. And the third is trading and clearing is those brokers having enough capital. Having it's mentioned here they have it's almost about they need to have a 500 million and above capital for that purpose, and they will not be dealing with what currently the brokers are doing. They will be settling the trades of those clients who used to be the clients of TO, trading only clients. So the things are a bit getting complex in that. Uh, but there is a concept of because once these trades are being settled by the trading and clearing, so there is an issue of confidentiality as well. So there is a concept of professional clearing member that is being introduced as well. So it's in the pipeline. So it's in the pipeline. Still, it's going to be notified as well. Exposure limit is how many times you can trade, what exposure it can take. How much position he can take. Yes, because it's trading only. Okay, the key challenge is I simply just say that there's this low saving rate, and the saving rate is our saving habits are towards the national saving and all that, rather than towards the stock market and all that. This they provide also a form where investment can be done, but because lack of awareness and about the knowledge of the products of capital market, most of the people are investing their products in saving certificates and all that. Sorry? Last slide. Last slide. The exposure limit. So if I have 300 rupees, would it be wise to go with a broker, or should I buy this trading only license and trade myself? Okay, this is the limit of the trading only broker. Right? So when he is only trading, he is not keeping any custody, he is not doing any clearing. So technically, the risk of default and is minimized because he doesn't have any funds of the public, of the clients. He doesn't have any custody of the clients. My question is that if I have to trade on stock market, should I go to broker, or should I buy this trading only license and What would you earn by investing over 30 million? avoid that fees, the small brokerage fees? That fees is Cost a lot. benefit analysis. That fees is a lot when we are getting small margins. Investing 15 million and incurring this cost, if you compare these two, you would rather. This 15 million is It is not just investing, it is money. it is not the fees. No, it is your deposit, it is your paid up capital. But by getting this certificate or this trading license, it is not just having a license. You would be under a regime. You have to comply with so many things that a broker is doing right now. That you would rather, being an investor, you would consider being an investor. Okay. The key changes is what Oves has already told, that we have a very small fraction of investors in the market that needs to be increased. Main challenge is there are very few investors, and out of those active UINs that I have shown you, like 26,000, out of that it has been discussed that only 150,000 are real active traders, And not even the two. you would be surprised that
average number of accounts per month where at least one trade is being undertaken is somewhere around 30,000. That is it. And to your more surprise, there are so many accounts that are, I can have multiple accounts and I can trade from multiple accounts. So the number of investors are even less. So what exactly is the reason? Multiple. Thank you very much. Okay. For me, the biggest reason is that when we invest in the stock market, we are actually being loaded. So we're very straightforward. When we invest in stock market, we are actually being loaded. Sometimes the stock prices are gone that high for no reason. There is no reason actually. And sometimes the prices are going down for no reason. So we feel like I have personally invested in stock market 10 years ago. And I personally feel like ये तो मतलब मजाक हो रहा है ना. I mean, you can say, see, no, this is what, and this is where we are involved. For example, I'll show you my presentation as well, that we have set a limit for broker trade and keep a custody. Why? This was not there. A broker could invest, say, 20, 30, 40 million, 50 million rupees, and could have a custody of billions of rupees. And when I say billion, I mean billions of rupees. These are the schemes that we are not introducing to protect them, because I mean, you cannot expect a broker to invest, let's say, 20 million rupees, 50 million rupees, 100 million rupees, and being able to keep a custody of 200 million rupees. I mean, you would say, 20 crore रुपया लगाया है, तुमने कम से कम कुछ तो काम करने दो. No. So yes, it has to make a business sense, and it has to mitigate the risk. This is how you manage the risk. So let's start with my presentation. There would be quite a few things that would be colliding with what the text has already covered. So I'll just skim through those. CDC was incorporated in 1993, was given license and started operations in 1997 through CD Act, again passed by the Parliament, and still we are not an organization by any stretch of imagination. Ecosystem, as explained by SCCP being the apex regulator, NCCPL, PSX, and CDC being the SRO. What is SRO by the way? Right. 230 registered brokers, 22 AMCs, asset under management through AMCs is $5.5 billion. Domestic retail investors is 230,000. Mutual fund through mutual fund 15,000. Institutional investor 2,500. Foreign institutional investors are 750. Listed companies 534. Market capitalization around 51 billion. Free float is approximately 27%. Now, your question, what is the difference between IS account and sub account? This is just IS account is the account that you open directly with CDC, and the sub account is, as explained by Jack, is the account that is opened under the umbrella of the broker, which is also called participant or the track broker. So sub account is managed by the broker. IS account is managed by the investor himself. So these are the differences. This is sub account is open with the broker, while the investor account is open with CDC. Direct settlement. This is the advantage of having a sub account, and every investor has to have a sub account. Direct settlement. Once you trade, you have the securities in your account. They will be directly moved out if you are sold. If you have purchased, the securities will be directly credited in your account. This is the advantage. Now, in case of IS, once those securities are parked in your sub account, you can move the securities from sub account to IS. Again, controlled by the participant, the sub account, and controlled. It is under the control of the investor himself. What are the investor protection measures? Because what is the focus of CDC presentation is this investor protection and the measures that we have taken. Interactive voice response facility we have SMS activity, web access, e-alerts, then we have e-statements. Achha. If you want to have a SMS subscription facility from bank,
bank will charge. CTC doesn't charge. So much so that if you want to have a sub account or ISN, you got to have SMS subscription. You cannot have accounts without SMS subscription. So we have made it mandatory. Your account would be blocked if you unsubscribe. Despite being free of cost, we have made it mandatory. Why? Just to protect you. Then interactive voice response, we have web access, you can have access to your account at your click. Again, e-alerts. Once the trade is settled in the account, you will be getting better. E-statements. Earlier, we used to have an option that you can subscribe for e-statement for monthly or quarterly or half yearly, whatever the case may be, as per the convenience of the client. So we gave this option, but we revoked this option. Now it is monthly. We will send it monthly, no matter what. If you don't want monthly, even then we will send it monthly. You have to just check it. If the investor does not want to check it, even then he has to check it. This is how we are forcing clients to get involved in the business. Initially, what used to happen, the clearing system was like that national clearing used to settle the securities into the main account of the broker. And then broker used to transfer the respective securities into the sub accounts under his participant umbrella. This was again changed. Now the securities would be moved in directly into the sub account and picked directly from the sub account. So broker's involvement eliminated. As I said, limit on asset in the custody. A broker can keep maximum of 25 times of the net worth, which is called capital adequacy level. So he cannot keep more than 25 times of that. So again, now again we have daily compliances. For example, as was mentioned about the pledge. For all pledge transactions, we call the pledge authorization on daily basis from the brokers. We check it on daily basis. We make sure that no securities are left in the main account of the broker. Daily. There are so many other daily. For example, limit on asset in custody. CDC monitors the limit on asset in custody on daily basis. And there are obviously once any broker breaches it, there are certain actions, series of actions rather that are taken. But yes, it is a daily compliance. So we ensure that we check the daily compliances in order to protect the investors. Yeah. And CCPL capital gains calculation के capital gains आता है. हर लोगों मैंने एक transaction की आज के दिन 12 o'clock. Before visit तो calculate करता है. लेकिन वो अपना जो मेरा gain होगा वो at the time of transaction का rate लेगा या day end का average rate पे transactions में. आप for example आपने sell कर दिया था ऊपर के लॉक पे, मार्केट बंद भी नीचे के लॉक पे तो नहीं ले. नहीं day end पे देखिए No. It's your trade, your buy price, your sell price, acquisition price, which is called acquisition price. Your buy price, your sell price. It's not, although it does not come under the ambit of CDC, but yes, since I have the knowledge, so that's why I'm saying it has to be yours. And this is what makes sense. Closing price does not make sense. Regular investor awareness sessions. This is what we are trying to do. As recent as yesterday, we had an investor awareness session at a CDC location, free of cost. In fact, we actually do give surveys to those. Please come attend the session, get your awareness, and be served as well. So, and it is not just CDC, house, all here. There are regular, and when I say regular, I mean regular investor awareness sessions across Pakistan, not just Karachi or Islam, but across Pakistan. So yes, what we are doing, what we can do, what is in our jurisdiction. Okay, how can I protect myself? Activate CDC access services. There are IVR, SMS, e-statement, e-alert. Then you can have account balance statement dispatched to account holder via email or
courier. Okay. In those statements, in case you have not subscribed for e-statement, because for individuals, Pakistani individuals, e-statement is not mandatory, right? So if you have not subscribed for e-statement, CDC would be sending you through courier. Obviously not monthly, but I guess half year. Yes, half year. We'll send you twice for the statements through courier. Get your account activity reports and reconcile your movements. It is advisable, obviously, to open an account with IS. Obviously, then you'll have your control. Because when you have sub account, as mentioned earlier, broker has the authority because it comes under the umbrella of the participant or the broker. He has the authority to sell options. Right? So if you open a sub account, the shares would not be able to be moved by the broker. It would be you who would be moving. Visit the website. What are the recent digital initiatives that we have undertaken? Online transaction. Okay. What is online transaction? First, the system, the CDS, Central Depository System, that is the core system of CDC. It has a provision or restriction, whatever you call it. You cannot move shares from your account to your brother's account, even if you want. System is restricted. System restricts you to move the shares from your account to your brother's account, to your parents' account. So much so, if you want to move a share from your account to account where you are principal account holder, having a joint account holder, your spouse or sibling, or you cannot. It is apple to apple matching, right? See, just to protect. Now, what is online transaction? You have the power to move the shares from IS account to sub account. What used to happen earlier was that you used to bring the check, like any check of bank, and move the shares from IS account to sub account. Again, apple to apple matching would apply. Now you can move those shares from your laptop to mobile. This is the initiative that we have the app. Again, all the accesses are available that are required. Account tracking 24/7 online transaction, as I explained earlier. You can view up to 30 days transaction, view the corporate actions. What are corporate actions, by the way? Anyone? Corporate actions. What are corporate actions? Anybody? Corporate actions are dividend is a corporate action, bonus is a corporate action, right is a corporate action, merger, demerger, split, consolidation, subdivisions, these are all corporate actions. So you can have the corporate action details as well, personal information. तो ये बेसिक सीडीसी एक्सेस नेक्स्ट के मुझे अपकमिंग डेवलपमेंट के मेरे पास है वाइस स्टेप वाइस और है तो अपने बेसिक सी वेबसाइट पे जाके EIQ system. What is IQ? Initial public offering. We have made it electronic. What you got to do is you have to register on e-services portal for once, and all the services will be available for you to be activated. E-services, you register one time, and every time a new item would come in, you would have the option and you would get the alert to subscribe if you want. Once you subscribe there, the amount is your whatever the multiple is. If let's say minimum base quantity is 500, and if you want to have a multiple of 2, that goes 1000 shares, you can just click 2 and subscribe. It's subscribed. Now you will get a transaction ID. You can go to any bank's portal which you have, put the transaction ID out there, and pay. It's paid. You only see, and you are subscriber IQ. Initially, it used to be a real time cumbersome process. You used to have a form for every IQ. You used to fill it and ensure that no correction, no overwriting, nothing. You had to submit your NIC
go to the bank, pay with your check, and then go and submit. This used to be a real-time process, so we have digitalized it. Likewise, for IS account holders only, we have introduced this facility of subscribing letter of rights electronically. Dividend repository. If anyone who has the experience of investing in stocks, you would know that previously dividends used to come to your mailing address in terms of a check with a counterfoil mentioning that this is the amount, gross amount, this is the tax, this is the dividend, this is the net amount, and you can deposit it. And you can keep the counterfoil with you for the tax purposes at the year. It has been digitalized. Now, no public limited listed company can send you these checks. Not even the counterfoil. It is all digitalized. You can just subscribe, like e-services, you are subscribed, registered on e-services, you can get the services of EIPO, you can get the services of e-dividend. Same registration, right? E-dividend is कब से announcement है ये? 6th November 2017. सर अगर इससे पहले के जो मुझे मिसाल में काउंटर्स चाहिए तो वो ई-डिविडेंड सर्विस अवेलेबल होंगे या Post 2017. Not in fact, post 6th November 2017. W like. So सर अगर कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड नहीं है वो कोर्स क्लास नहीं कर सकता उसको किस तरह डिविडेंड दे Dividend, इसका dividend से ताल्लुक नहीं है कि आपको बता दूं. It has nothing to do with the dividend directly. Dividend would be deposited directly into the bank account. just a notification It is a notification. It has different reports. It has counterfoils. It has for the entire year summary. It has a tax deduction summary. It has a account deduction summary. It has got every information that was previously being maintained by yourself in the file. Now it is on your desktop or mobile or laptop, whatever you use. Dividend would be deposited directly in the bank. Check would not be issued. And for that too, initially it used to be a bank account number. Now it is mandatory to put an IBAN, international banking account number, which consists of 24 digits. So only those dividends would be paid where the account has the IBAN. So again, digitalization. Online account opening with CDC. You can go for the online account opening if you feel like. E-voting for companies where CDC share registrar services is acting as a registrar. We also offer e-voting services. We have these accreditations and certifications. ISO 27001. We are the first company to be certified as 22301 in Pakistan. We are ISA 3402 for overall depository operations. We are affiliated with ICAP, ACCA, ICW, and CIMA, being the approved employer. We have the partnership with CF Institute for Employee Development as well. This is what we have for now. That's a question we haven't asked any. सर ये सीबीसी अकाउंट ओपन करवा रहे तो उसमें ये होता है पहले बैंक से आप पहले नोटिस से लेटर इशू होता था मिसाल में अपना अकाउंट ओपन करवा रहा हूं तो बैंक से जस्ट लाइक एक जहां पे आपका अकाउंट ओपन है वहां पे बैंक की तरफ से लेटर जाता है अब वो तो ऑनलाइन के थ्रू है लेकिन पहले भी लेटर भी जाता था तो फॉर्म हो जाता था उसके लिए एक बैंक का एक पोर्शन होता है वहां पर लोग साइन कर देते थे स्टैम्प कर देते थे अब वैसे भी खत्म हो गया एक अब नई रिजीम आ चुकी है अब ये रिजीम का सीसीपी नहीं है तो दैट वाज I don't know CQ I don't know if it would be fair to introduce it but let's introduce NCCPL has been granted with the license of Centralized KYC Organization CKO अब कोई भी अकाउंट नहीं खुल सकता जब तक आपने CKO से यानी कि सेंट्रलाइज केवाईसी ऑर्गेनाइजेशन से अपना यूकेएन इशू नहीं करवाइए यूकेएन इज यूनिक केवाईसी सो
चूंकि अब सिक्योर रिजीम आ गई है, इंप्लीमेंट हो गई है, एंड नो अकाउंट दैट इज विद द ब्रोकर्स, आईएस अकाउंट खुल सकता है अभी भी बगैर सिक्योर के। कोई नॉन ब्रोकर के लिए मेंबर के पास अगर आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं आपको खुल सकता है विदाउट सिक्योर, बट अगर आपको किसी ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाना है तो आपको सिक्योर रिजीम में ही खुलवाना होगा, उसके अंदर आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होगी, ठीक है। तो वो सारी चीजें जब हो गई, उसके अंदर मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, there are so many things that have been done again just to protect the investors. तो आपको बैंक वेरिफिकेशन सब ये है, we got away with this process कि भाई आपको बैंक जाओ वेरीफाई करो आपको एक स्टेप करना, लेकिन वो ऑब्वियसली उस वक्त हम इन्वेस्टर ने पहली मरतबा बीडीसी में घुसा, हमें नहीं पता वो कौन है, तो चूंकि हम बहुत पता चल गया क्योंकि वो सिक्योरिटी के अंदर आ चुका है, तो यार इसलिए आप उसकी First, what are the risks by owning maintenance of account with the broker and not with the CDC? Second, if I sell my shares, how many days does a broker make a payment to me? see risk is the real. Broker has the capacity, has the provision, has the eligibility to sell off the shares at any time. Why? Because you have opened an account under the broker's umbrella. You have consented the broker that you can take the action. So it is Without my consent. obviously if you talk legally, I mean you are asking about the risk, no? Risk is where something fishy happens. You have consented that you can take the action on my account. Yes, by law he cannot take any action without your direction, but he has the capacity. So this is the risk. At CDC we cannot sell the shares. CDC cannot clear the sales. Why? Because we are not track holder, trading right entitlement certificate holders. Although the entire system that broker uses for the purpose of custody is CDC system. It is CDC's sub account. And in the same pattern we have the IS account. The broker is participant of CDC. Likewise, IS is a participant of CDC. Same mechanism, but we cannot sell. We cannot buy. Broker can sell. So this is this. What was the second question? How many days does the Keep broker? it. Keep it. Good question. In case broker get first, then what happens? Why would he get first? Not enough capital. Why? You have sold your shares. Again, since there is no PSX representative, there is a concept of segregation of assets. Okay. So it's standing there. Okay. I know you have. Okay. PSX, segregation of assets. Please. I'm sorry, I didn't hear the question. I was waiting for my presentation. No. I'm sorry, what's the question? The technical is not enough. First, financially illiquid or Eligible. separate to legal issue as It's not. Usually, segregation of assets, there is a concept of segregation of assets invoked by PSX for the brokers that they have to report कि कितना कैश आपके पास है under your paid-up capital, उसमें से कितना आपका proprietary है, कितना clients का है, clients का कौन सा कितना 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 किसका है, तो they have to report. Again, there are processes. So, कौन किसको कितना implement करता है, कितना supply करता है. again somebody asked to broker पे क्या हो रहा है इस डिपार्टमेंट इसीलिए है सारे इन्वेस्टमेंट में करेंगे सब लोग मोस्टली इन्वेस्टर्स के लिए ये जो It happens normally just for this. I'll give you explanation कि यहाँ पे जब broker का आप कहते हैं bust होता है, it's the situation where he goes for trading, he allows the trading to his clients, और वो भी उनसे जो भी हम लोगों ने मार्केट लेवरेज प्रोडक्ट्स हैं ना, वो लेवरेज प्रोडक्ट्स में आने की बजाय उनको जो रेडीमेड जो ट्रांजैक्शंस हैं वो करवा रहे हैं, लेकिन उनसे फाइनेंस नहीं ले रहे. दे आर फंडिंग देयर ट्रेड्स,
होता ये है कि वो डेबिट बैलेंसेस क्रिएट होते हैं और वो रिसीवेबल्स का एक बहुत बड़ा चंक बन जाता है। और जब इस तरह की सेटलमेंट, जब यहाँ पे उसके पास इतने रिसीवेबल्स इकट्ठे हो जाते हैं लेकिन उसके पास कैश शॉर्ट होता है, तो देन इट इंड्यूसेस हिम टू प्ले विद द सिक्योरिटीज ही इज होल्डिंग। वहां पे ये सिक्योरिटीज से मैनिपुलेशन इंड्यूसमेंट हो जाता है। बहुत सिंपल है। अगर नेचुरल इकोसिस्टम है ना तो बस होने का सवाल नहीं। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम उसने अपना बनाया तो बस हो सकता है। अगर अपनी लंबी ट्रेड मार दी 10 अरब रुपए की, उसमें से 5 अरब रुपए का, 2 अरब रुपए का, 1 अरब रुपए का लॉस कर दिया, उसका अपना एसेट्स जो है वो 25 करोड़ रुपए के तो नेचुरली प्रॉपर्टी आप चलोगे कोई मसला नहीं। हाँ, अगर आप अपनी डेविएट करोगे अपने रास्ते से एग्जैक्टली share. That's my money. Why would I have to wait 2 days? it is a trading cycle. It is a trading cycle, approved trading cycle. Once you trade on stock exchange, I mean, what's logic for two? there are certain logics. There is no there's no stock exchange. I am saying with authority. There's no stock exchange having T+0 trading cycle. Practically, आज आपने डिसाइड किया कि मुझे इतने शेयर्स परचेज करने हैं, मुझे बस करने हैं, अब मेरे दिमाग में आ गया। आज के आज अपने ब्रोकर को पैसे कैसे दोगे? और ब्रोकर उसी वक्त नेशनल क्लियरिंग को पैसे देगा और नेशनल क्लियरिंग उसको सेटल करके वो शेयर दे देगा। एक कंपनी शेयर है, वो पैसा मुझे पूरा मिल जाएगा, मैं डी कंपनी शेयर। तो आपको आज पैसा देने में नहीं है। आपने आज किसी को सेल किया, ठीक है, आज सेल कर दिया, उसके आपको पैसे मिलेंगे कब? 2 दिन बाद। आपने आज परचेज किया, उसका पैसा आपको आज देना भी नहीं, वो भी कब देना है? तो आपके जो पैसे आएंगे वो वहीं से चले जाएंगे। नेट बाय नेट सेल का कॉन्सेप्ट है जाएगा। मतलब 2 दिन वेट क्यों करना ये है साइकिल को एफिशिएंट बनाने के लिए और इफेक्टिव बनाने के लिए। एवरीथिंग इज ऑनलाइन। नहीं एवरीथिंग आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं। लेट्स सपोज आपने सिर्फ बाय करनी है, मैं वही बोल रहा हूं, आपको 1 करोड़ रुपए के शेयर्स बाय करने हैं। आपके अकाउंट में जिस अकाउंट की चेकबुक आपके जेब में पड़ी है, ठीक है, उसके अंदर 10 लाख है, बाकी 90 लाख में दूसरे अकाउंट में पड़े, क्या करोगे? आपको तो ब्रोकर को भी पेमेंट करनी पड़ेगी ताकि ब्रोकर अभी पेमेंट करे। अच्छा, वो पेमेंट भी कैसे होगी? आपको तो IBFT करना पड़ेगा और वही IBFT बैंक को नेशनल क्लियरिंग को करना पड़ेगा और ब्रोकर को नेशनल क्लियरिंग को एक ही दिन में वो सारी चीजें सेटल होगी। और एक इंडिविजुअल की वो ट्रांजैक्शंस को तो किसी से रोज नहीं लेगा। हाँ, वो नेट आपके सेटलमेंट पूरे NCCPL डील करता है कि ब्रोकर की टोटल एक दिन की जो सेटलमेंट है वो टोटल कितनी नेट बाय नेट से इस तरह से। चले PFX अभी टाइम है, overshot time और Assalamu alaikum everybody. My name is Fahad Asif. I'm representing Pakistan Stock Exchange. I'm manager at digital media. PFX में recently जितनी भी digital पे आपने देखा होगा चीजें जो इंट्रोड्यूस हुई है, कोशिश की है उसमें mention होगी। एक छोटी सी presentation आप लोगों के लिए put together किया, जिसमें we'll take a look at the economical situation थोड़ा सा top से देखेंगे। Reason being today we are here ये डिस्कस करने के लिए कि अभी जो करंट सिचुएशन है, हाउ यू कैन इन्वेस्ट इन द स्टॉक्स। वैसे बाय द वे आप लोगों में कौन कितने लोग यहाँ पे जो लोग इन्वेस्ट करते हैं किसी भी एवरेज में? इन्वेस्टर कोई नहीं आप लोगों में? म्यूचुअल फंड में आप पहले किया स्टॉक मार्केट में आपने इन्वेस्टमेंट की है, बाकी आप लोगों से ज्यादा मैं AMC से एसोसिएटेड है, आप ऐसे मैनेजमेंट कंपनी से PMX में आपने किया, मर्केंटाइल और इसके अलावा जी सर स्टॉक में किया। स्टॉक में सर कैसा रहा है सर? जनरल करवाइए। ठीक है, तो बेसिकली क्योंकि माइनॉरिटी यहाँ पे थोड़े से जितने लोगों ने उसमें से कुछ लोगों ने किया है तो बाकी लोगों के लिए प्रोसेस जो टेक्निकल बातें हैं वो पहले आपसे शेयर होंगी, तो विल प्रॉब्ली हम थोड़ा सा रिवर्स उसमें जाएंगे जिस पे थोड़े से स्टैट्स हमने बताए यहाँ पे। पॉपुलेशन के बारे में अगर आप बात करें तो इफ यू नो कि पाकिस्तान जो है 6th लार्जेस्ट ठीक है कंट्री इन द वर्ल्ड विद 217 मिलियन पीपल। सो हु इज द टारगेट ऑडियंस, या यूं कह लें कि वो लोग कौन से हैं जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या एज अ होल एज अ पाकिस्तानी हम चाहते हैं कि इन्वेस्ट करें, कौन लोग हैं?
क्या वो बिजनेसमैन है या वो किसी और किसी पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड, बेसिकली वो लोग सर यूथ जो है हम चाहते हैं कि वो इस तरफ है। ठीक है, उस क्यों और क्या हम वो बात करेंगे। यूथ यहाँ पे देखें, यूथ कंसिस्ट ऑफ 63% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन व्हिच इज द मेजॉरिटी। तो हम उसको क्यों टारगेट करना चाहते हैं, लुक एट इट इन अ बिट। बाकी तो यहाँ पे ये बताया गया कि लेबर फोर्स की पार्टिसिपेशन जो रेट है व्हिच इज 53.3%, अगेन इज ऑन द हायर साइड, एंड देन 42% ऑफ द टोटल लेबर फोर्स इज एम्प्लॉयड इन द एग्रो सेक्टर। तो एग्रीकल्चर जो है वो हमारा इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, और ज्यादातर हमारे पास जो आप यूँ कहने के कैपिटल वगैरह जनरेट करते हैं या जो भी आगे जाने के जो बहुत सारे रास्ते हैं उसके अंदर एग्रीकल्चर इज वन ऑफ दोस थिंग्स फॉर द मेजॉरिटी। अच्छा, ग्रोइंग मिडिल क्लास, we have got a 40% of the जो हमारी 40% total population है, it's a growing middle class, which is what can I do here? Moving towards upper middle class. जी, जी। और नीचे उसके स्टैट्स की बताए गए हैं कि ओवर 6 मिलियन हाउस होल्ड्स, यानी 6 मिलियन हाउस होल्ड जो है उनकी एनुअल इनकम जो है वो 8900 USD है, ये सालाना बात हो रही है। ठीक है, वर्सेस नेशनल एवरेज ऑफ अप्रॉक्स 1200। नेशनल एवरेज क्या चीज है, ओवरऑल जो लोग अर्न करते हैं किसी भी कंट्री या स्टेट के अंदर, वो हमारे पास तकरीबन 1200 बनता है, रफ एस्टिमेट है। So we are going towards the growing middle class. It's basically 40%. It's not on the majority, but it's there. बाकी कंज्यूमर की स्पेंडिंग दिस रिलेट्स टू दैट पर्टिकुलर पार्ट कि कंज्यूमर स्पेंडिंग की ग्रोथ जो है वो हमने लास्ट ईयर जो रिकॉर्ड किया वो 12%। ठीक है, नाउ कंज्यूमर स्पेंडिंग और पाकिस्तान इकोनॉमिक ग्रोथ इज कैरेक्टराइज्ड एज कंजम्पशन लेड ग्रोथ एंड दिस इज ट्रू फॉर डेकेड्स। अच्छा, कंज्यूमर स्पेंडिंग ग्रोथ क्या चीज होती है? कंज्यूमर स्पेंडिंग ग्रोथ ये चीज होती है, ये नहीं कि आपने स्पेंड क्या किया, बल्कि ये कि आपने यूँ समझ लें कि लग्जरीज की तरफ कितना गए हैं, किस तरह की चीजों में कितनी आपकी इन्वॉल्वमेंट है। तो उसकी ग्रोथ हमारी 12% है, विच इज गुड इनफ गिवन द फैक्ट कि वी से कि वी आर अ पुअर कंट्री, डेवलपिंग नेशन, बट वी स्टिल गो फॉर लग्जरीज। महंगी गाड़ियां भी खरीदते हैं, महंगे फोन भी खरीदते हैं, सब चीजें करते हैं। बताने का मतलब ये है, देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर इन्वेस्टमेंट्स। वी स्पेंड अ लॉट ऑफ आवर मनी ऑन द थिंग्स that we don't really need. For example, एक छोटे फोन से भी काम कर सकते हैं, लेकिन हम we like to go for expensive phones. iPhone X है तो उसके बाद के नया आ गया, हमें वो लेना होता है, so on. स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा अगर देखें तो सर्विसेज जो है वो 2068% उनका शेयर है। सर्विसेज के अंदर क्या चीज आती है, उनके कंपोनेंट्स हैं होलसेल एंड रिटेल ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस, प्राइवेट सेक्टर्स, इस तरह के बहुत सारे आते हैं। एंड देन इंडस्ट्री आ जाती है। इंडस्ट्रियल के अंदर इसमें टेक्सटाइल वगैरह और ये सब जितनी भी वो है ये सब इसमें ब्लेंड करते हैं। देन फूड बेवरेजेस वगैरह। एग्रीकल्चर अगेन उसका 12% शेयर है, which you can see 25% of Pakistan's total land area is under cultivation. So there's a lot of work that is being done there. बाकी प्रोडक्शन वगैरह बताई नहीं है, नीचे के कितनी कितनी और क्या है। यहाँ पे स्टैट्स हैं ये ओवरऑल पॉपुलेशन वगैरह के। पॉपुलेशन आप नंबर पर देख रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल इंक्लूजन देखें तो वो बहुत ज्यादा नहीं है, इट्स ओनली 50 मिलियन। इस फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये होता है कि कितने ऐसे लोग हैं उस टोटल नंबर में से जो लोग किसी न किसी किस्म की फाइनेंशियल प्रोसेसिंग में या इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जांपल कितने लोगों के बैंक अकाउंट्स हैं, ठीक है, ये कितने लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ये सारी इंक्लूजन हुआ है। तो बेसिकली 50 मिलियन जो है वो बैंक अकाउंट्स है। म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर जो है 300,000 एंड देन स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर जो है वो 2,25,000 है। एनएसएस जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह और ये सब चीजें हैं वो 7 मिलियन है। तो देयर इज अ ह्यूज गैप उन लोगों के लिए जो, अच्छा इसमें मजे की बात ये है कि जो 50 मिलियन बैंक अकाउंट्स हैं, ये भी इसका मतलब ये नहीं कि 50 मिलियन लोगों के बैंक अकाउंट्स हैं, इसका मतलब ये हो सकता है कि 25 मिलियन के हैं या 20 के या 40 के। रीजन नहीं, हम सब लोगों के 3-3, 2-2 अकाउंट्स होते हैं, तो इस वजह से हम बहुत पीछे हैं। ये देखने में लगता है कि 50 मिलियन इज अ बिग अमाउंट, इट्स नॉट। मेरे 3 अकाउंट्स हैं, आपके इधर हो सकता है 4 हो, सबके होते हैं। तो जरूरत क्या है इसमें कि हम लोग अकाउंट्स खुलवाएं। अकाउंट्स ना खुलने की ज्यादातर वजह क्या है? प्रोसेस मुश्किल है, लोग अवॉइड करते हैं। जी बिल्कुल ट्रू। टैक्सेस वाली बात कहीं ना कहीं ठीक है, मोस्टली बिजनेसेस जो है अगर आप कराची से निकल जाए, वहां से बाहर निकलते हैं,
कैश पे डील होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कैश पे डील होता है, बड़े-बड़े सौदे जो है वो कैश पे आपके डील होते बिल्कुल ऐसे। और उसका मेन रीजन ये कि चाहते हैं हम क्या पेपर वर्क में पढ़े, ये सब लेकिन जब भी बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं इतना आराम से नहीं खुलता है। स्टेट बैंक की रेगुलेशन है कि आप सिर्फ बैंक से खुलवा सकते हैं। ट्रू। मैंने अपने ऑफिस के स्टाफ को भेजा, बैंक खोल भी नहीं रहा कि मतलब घर में सर मेरे जैसे पढ़ने के थोड़ा बहुत जो पढ़ मुझे मुश्किल होती जाता हूँ, मैं कहीं पे कुछ अकाउंट खुलवाने में इतनी सारी चीजें मांगते हैं, ये खुल जाता है फिर वो ई बैंकिंग नहीं खुलती, कहते हैं ये ले आए वो ले आए, वो कल करा के जो है तो बंदा कहता है यार छोड़ो फिर मैं कहीं और खुलवा लेता हूँ, फिर ऐसे करते करते अकाउंट एक इधर खुलवाया है, इधर आधी ट्रांजेक्शन यहाँ और ये क्रेडिट कार्ड में दूसरे बैंक का है, तो ये मसले मसाइल है। मतलब मॉडर्न बैंकिंग में इतनी आसानी हो गई है, जैसे अब तो ऐप्स के द्वारा मतलब लोगों को उसकी अवेयरनेस नहीं है। मैंने रिसेंटली इजी पैसा इंस्टॉल किया तो मैंने कहा आई वाज सरप्राइज कितना आसानी से काम बहुत होता आसानी है। से। मतलब मैं इसको इन्वॉल्व होकर मुझे नहीं पता, तो एक आम आदमी से उसको मजा ही नहीं है इस चीज का, पता नहीं कितना फायदा हो सकता है। बाय द वे एक और ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी है कॉल्ड फिंजा फाइनेंसेस, रिसेंटली मैंने एक अकाउंट वहां पर खुलवाया, मैं बहुत हैरान हुआ उसके अंदर फीचर देख के कि क्या वहां पे लोन्स प्रोसेस हो रहे हैं आपके, अब बैठे बैठे मैं कैब के अंदर आया, मैं पैसे खत्म हो गए थे, इससे पैसे देने मुझे उसने बताया था कि इसमें होता ही देखिए, तो उतनी लाइक मैंने कभी यूज भी नहीं की, क्योंकि 2 मिनट्स मैंने उसको वहां से ट्रांसफर कर दिया उसके फोन नंबर डाल के, तो इट्स गेटिंग ईजियर। बट आप ये जो सारी बातें हो रही हैं, इसके अलावा एक और फैक्टर है विच इज द पॉवर्टी, लिटरेसी जो हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा है, और हम एक तो वैसे मुश्किल है, ऊपर से उनको वो ना समझ पा रहे हैं ना पढ़ पा रहे हैं, ये भी इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स। अच्छा, पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज एट अ ग्लांस क्या है ये? दिस इज बेसिकली कितनी लिस्टेड कंपनीज है हमारे पास। लिस्टेड कंपनीज आप सबको मालूम होगा क्या होती है, वो सारी कंपनीज जिन कंपनीज के अंदर आप लोग एज एन इन्वेस्टर या मैं एज एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता हूँ। वो सारी कंपनी जो आईपीओ की है या पब्लिक ऑफरिंग की है उन्होंने, यानी वो चाहते हैं कि उनके पास कैपिटल आए और हम लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। वो कंपनीज करंटली 534 कंपनीज, ये नंबर मोस्टली एक्यूरेट होता है, रीजन बीइंग बहुत कम कंपनीज होती हैं जो इन्वेस्ट कर रही होती हैं। यूजुअली दिस नंबर स्टेज अगेन एक महीने में, कहीं 2-3 महीने में, जैसे लास्ट जो कंपनी लिस्ट हुई थी उसका नाम था इंटेल, वो भी टैनियम और सॉक्स और ये सब का काम करते हैं, उनकी हुई थी, उसको भी काफी महीने हो गए हैं, इवन दो के एग्रेसिवली उस पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। यस आई थिंक इट्स बीन अ ब्रेक अप, काफी दिन हो गए बाद। अच्छा, 226 जो है वो शरिया कंप्लाइंट लिस्टेड कंपनी है। शरिया कंप्लाइंट कंपनीज के बारे में आप लोगों को इल्म होगा, मैम आपको पता है शरिया कंप्लाइंट कंपनीज क्या होती है? जो इस्लामिक जो है इसमें इस्लामिक प्रोडक्ट्स को डील करती है। तो जी बिल्कुल, तो बहुत सारे लोग जैसे जितना मुझे नॉलेज है उसमें जो आपके एसेट्स होते हैं या आपके जो लोन्स होते हैं, आप अपनी एक परसेंटेज डिफाइंड होती है जो मुझे तो याद नहीं है, आपकी जो इस्लामिक फाइनेंसिंग अगर लोन्स आपने इस्लामिक लिए हुए हैं या आप जो लोन्स दे रहे हो वो इस्लामिक मुताबिक, और जो आपके एसेट्स हैं उनमें एक वो होता है इस तरह से एक परसेंटेज दी हुई होती है कि आपके एटलीस्ट इतने जो एसेट्स हैं शरिया कंप्लाइंट यानी आपके बैंक 2/3 शरिया कंप्लाइंट बैंकिंग वाले बैंक में प्रॉफिट आ रहा होगा। बिल्कुल ठीक है, फिर मोर और लेस ये इंटरेस्ट आप ना ले रहे हो बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इसका बैंक्स वाला की अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अब इस पैकेट में आप आ सकते हैं as long as you meet the Sharia compliance regulations. only for banking stuff or other stuff as well. No. For example, अगर आपकी कंपनी है, you make something Pepsi Cola के आपने कोई ऐसा कोई बनाया, आपने अप्लाई किया, शरिया कंप्लाइंस की आपने सारी चीजें मीट की, आपके पैसों वाला पार्ट, आपकी ट्रांजैक्शन लेन देन जितना भी आपने ट्रांसपोर्टेशन का ये सब कुछ, और आपके प्रोडक्ट आप आराम से कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू आर मरीन ब्रूवरी का कोई, वो क्या मार्केट बनाते हैं अल्कोहल ये जो भी चीज है, तो वो शरिया कंप्लाइंट नहीं हो सकता क्योंकि अगेंस्ट द शरिया इन अ वे, यू नो। तो इस तरह के कुछ उनके वो रेगुलेशन होते हैं। टोटल जो है वो तो नंबर बहुत ज्यादा है, ये अलग ये इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करके बताया, ठीक है। और रिमेनिंग है वो कमर्शियली कर रहे होंगे, मतलब कमर्शियल होंगे नहीं, आई एम सॉरी, आई थिंक मैंने गलत शायद बता दिया, ये टोटल में से बता रहे हैं कि 534 या 226 है टोटल हो जाएगा। 300 कुछ या सर टोटल कंपनी से रजिस्टर्ड है जो लिस्टेड ना भी होंगे आपके सब टोटल कंपनी रजिस्टर्ड इतनी रजिस्टर्ड है, वो सब लिस्टेड भी है मोर और लेस, कुछ है जो डिफॉल्टेड है। जी आई नो आपका मतलब क्या है, मुझे याद नहीं है नंबर,
वेबसाइट पे हम अभी मौका मिलेगा तो एक दफा देख लीजिए, वो चेंज होता रहता है। बहुत सारी कंपनी डिफॉल्ट हो जाती है, वो चली जाती है, कुछ कंपनी सस्पेंड हो जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो बहुत सारे उसके अच्छा, ये मुझे बताएं, शरिया कंप्लायंस साथ लिस्टेड कंपनी होने का क्या बेनिफिट है? मतलब क्यों कोई कंपनी शरिया, जब कमर्शियल में इतने अच्छे रेट्स मिल रहे हैं तो मतलब बहुत हाई सारी प्राइस होते हैं। जी बहुत सारी बेनिफिट्स हैं। इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। ये उन्हीं को टारगेट करते हैं, फॉर एग्जांपल अलमीज़ान, अच्छा बेसिकली अलमीज़ान के थ्रू बैंकिंग साइड से बस आप यूं समझ लें कि जैसे मैं शायद उसमें कर दूंगा, ये सर नहीं करेंगे, मिसाल दी है, अभी कैसे नहीं बोल रहा, ऐसे मिसाल है, हो सकता है मेरी भी थोड़ी बहुत है, तो बस यही बात है कि वो एक टारगेट करने के लिए अगर नहीं करेंगे तो मिस आउट कर जाएंगे। जो कंपनीज शरिया कंप्लायंट कंपनीज होती है, वो सिर्फ टारगेट, वो जो है ऑडियंस को टारगेट कर रही है। जो शरिया कंप्लायंट कंपनीज है वो लिस्टेड कमर्शियल पे ही मौजूद होती है, उसके बाद दोनों किस्म के कस्टमर्स होते हैं। जो आपके पास म्यूचुअल फंड हैं जो कि शरिया कंप्लायंट के होंगे, वो सिर्फ शरिया वाले नहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो आपका जो शरिया कंप्लायंट फंड्स नहीं है वो दोनों जगहों पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए जो कंपनी अपने आप को जो है दोनों साइड पे वो उसको शरिया कंप्लायंट भी अपने आप को करवा लेती हैं, ताकि जो है उनको दोनों किस्म के ऑडियंस फोकस हो। जी अगर टेक्निकली करना चाहें तो ये इट्स अ पॉसिबिलिटी कि आई डोंट नो कि क्या कंपनीज इस तरह, उनका क्या एजेंडा होता है, क्या किस तरह करना चाहते हैं वो, लेकिन आई थिंक इट्स अ पॉसिबिलिटी कि बहुत सारी ये कंपनीज एजेंडा ओआईसी का भी है, ठीक है, टू मूव टुवर्ड्स शरिया कंप्लायंस, और स्टेट बैंक की भी इनिशिएटिव है। मेरे ख्याल से तो बैंक्स को भी टाइमलाइन दी है टू कन्वर्ट इनटू शरिया कंप्लायंस। देखिए बैंक के अपने अंदर यही होता है कि जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड वगैरह है वो है तो कन्वेंशनल, लेकिन उनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड था, इट वाज कॉल्ड सादिक। अब वो उसमें क्या मसले मसाइल थे, आई वोंट गेट टू दैट, बट वो लोगों का वही होता है कि ये है बैंक तो नहीं है ना, बैंक तो कन्वेंशनल है, तो मेरे पैसे हलाल कैसे होते हैं, स्टफ लाइक दैट, तो ये सब थोड़ा डिबेटेबल बात है। Revolutionary statement कि everybody in Pakistan at least should have one branch of Islamic Bank. जी आई थिंक ये हाँ ये है जी 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 अभी तक है, बिल्कुल है, लेकिन 12-13 साल पहले जब मैं अपनी बैंकिंग सेक्टर में रहा था। ठीक है। अच्छा 7 इंडिसेस, हम दो चीजें, रिटेल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, यू नो व्हाट रिटेल इन्वेस्टर्स आर, 219 एक्टिव ब्रोकर, ब्रोकर्स के बारे में आपको बताया कि ब्रोकर्स कौन होते हैं, किस तरह से वो आपके पैसों के ट्रांजैक्शंस करते हैं, आपको हेल्प करते हैं इन्वेस्टमेंट करने में। इंडिसेस 7 इंडिसेस हैं, इंडिसेस आर सॉर्ट ऑफ अ प्लूरल ऑफ इंडेक्स, तो जो हमारे पास तकरीबन 7 इंडेक्स हैं, 2 और आने वाले हैं, मैं आगे चल के आपसे जिक्र कर दूंगा उसके बारे में। इंडेक्सेस क्या है, इंडिसेस के अंदर आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर और इस तरह से KSE 100 टॉप 100 कंपनीज जो जिनके अंदर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बाद जो टॉप 100 कंपनीज है जिनकी लिस्टिंग की गई है कि ये 100 है, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फैक्टर्स, वो कहलाती है KSE 100, एंड देन ये जो शरिया कंप्लायंट लिस्टेड कंपनीज दीज आर कॉल्ड KMI 30। इनको मीजान वालों ने जो है बोल इस तरह से इनकी लिस्टिंग की हुई है, तो इस तरह से इस पे 5 और इंडिसेस फॉलो करते हैं। आगे चल के वी आर लॉन्चिंग, ये मैं स्किप करूंगा क्योंकि इसके बारे में ऐसा हो गया बात कर चुके डिटेल में, ये भी हो चुका है। अच्छा इंपॉर्टेंस, अच्छा मैं आपको बता दें कि 2 नए जो इंडिसेस हैं वो आने वाले हैं। बेसिकली ETF के नाम से एक प्रोडक्ट है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज अबाउट टू लॉन्च दैट प्रोडक्ट, इट्स बीन इन द वर्क्स फॉर quite some time now, but ETF stands for yes, thank you. उसमें बहुत सारे, क्योंकि एक प्रोडक्ट लाने से पहले बहुत सारे मराइल से गुजारना पड़ता है और अप्रूवल्स और बहुत सारे मामला हैं, वो करने के बाद शुरुआत 5 साल लगे। ये कब तक हो रहा है? I don't know exactly. 12 साल तो 12 साल से मैं जब से ज्वाइन किया पहला कॉन्ट्रैक्ट मैंने पढ़ा तो 12 साल। So these things take time, but finally that moment is here. हम लोग खुद भी being part of PSX हम खुद वेट कर रहे थे, we get queries, hundreds of queries on a daily basis, कब हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि वो लोगों के लिए जिन लोगों को स्टॉक्स के बारे में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मैं कौन सा स्टॉक खरीदूं कौन सा बेचूं, क्योंकि दिस इज द ट्रिकीस्ट पार्ट ऑफ द मॉल। जैसे आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, आपने किया कि आप उसमें होते हैं, आपने कौन से एवेन्यू में इन्वेस्ट किया था आपने, म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड के अंदर तो आपने पैसा दिया और वो खुद मैनेज करता है आपका पोर्टफोलियो, सब कुछ आपको कुछ करना नहीं पड़ता। लेकिन स्टॉक्स में आते हैं तो ब्रोकर आपको बता जरूर देगा, लेकिन यू कैन नॉट जस्ट ट्रस्ट ऑन हिज हो के जो मर्जी करते रहो, तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे उससे कम्युनिकेशन में रहते हैं, हम स्टॉक्स देखते रहते हैं, वेबसाइट पे चेक करते रहते हैं, डेटा पोर्टल पे
किसके प्राइस नीचे ऊपर है, तो आप उसको इधर उधर उसमें यू प्ले अराउंड ऑन दैट. बट ETF का फायदा ये कि ETF जब आएगा तो यू बेसिकली बाय वन ETF. वंस यू बाय वन ETF तो उसके अंदर सॉर्ट ऑफ अ मिनी बास्केट ऑफ वेरियस शेयर्स, उसमें अलग अलग कंपनीज के डिफरेंट टाइप के शेयर्स होते हैं. तो आपको क्या होता है, सॉर्ट ऑफ यू गेट अ कंफर्ट के अंदर कि मेरे पास मल्टीपल शेयर्स हैं, तो अगर ये नीचे जाता है तो वो मुझे बचा लेगा दूसरा शेयर. यू वुड नॉट बी इन लॉस. एग्जैक्टली, डाइवर्सिफाइंग द पोर्टफोलियो. वो वॉरेन बफे का बड़ा मशहूर आपने पढ़ा होगा, कोट है, he says that don't never put all eggs in one basket. वो यही है कि आपने सारे पैसे एक जगह ना लगाते हैं. आगे भी थोड़ी सी इसके बारे में बात करेंगे. अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टिंग के बारे में ये है कि सेविंग और इन्वेस्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या है. बीट इन्फ्लेशन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इन्वेस्टिंग appreciates the value of your investment. इस सबको छोड़ के हम पहले इसको देख लेते हैं. आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कमेटीज वगैरह डाली होंगी? आप सताए पे लग रहे हैं ऐसे. आप नहीं डाली गई मतलब नहीं डाली आपने? जी सर, आपने डाली. आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? सही है. अच्छा, आपको फायदा लगता है? अच्छी चीज है. तो सही है, आपकी सेविंग हो जाती है. और किसको but लगता you है don't कि get the gain. Well, I would rather save the amount in saving account. मुझे तो अच्छी बात है. ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है. सही है. लेकिन time value for money जो है वो नहीं मिल रही है ना. if you get it first तो आपको वो तो बेनिफिट है, लेकिन अगर 12 लोग हैं तो उसमें से डेफिनेटली शुरू के 2 you are दिन the फायदा third होगा. one then. तो इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन ये तो एक ही कमेटी के हवाले से मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अर्ली जनरेशन ऑफ फंड्स के लिए तो ये एक बेस्ट चीज है. रीजन भी अर्ली जनरेशन ऑफ फंड्स कि अगर किसी की पहली है, दूसरी, तीसरी निकलती है. लेकिन ये कि अदरवाइज मैं समझता हूँ कि ये सेल्फ कंट्रोल जिसमें नहीं होता उसके लिए कमेटी अच्छी चीज हो सकती है. क्योंकि मैंने कई पार्टिसिपेंट से पूछा कि आप लोग खुद से ही अगर हर महीने अपने बैंक अकाउंट में या घर में कैप करते हैं अपना फाइनेंस, तो ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं होगा? तो उसमें जवाब यही कर सकता है कि सेल्फ कंट्रोल. सबका वही मसला है. मेजरली हम सेव कैन नॉट सेव. बचपन में जो गुल्लक में डालते थे वो नहीं हमसे समझती थी, छोड़ते थे उसको, तो वो मसला है. बट ये सारी चीजों में एक चीज हमने मिस की जिसकी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी. टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या चीज है? फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 लाख रुपए की VC डाली है, ठीक है, और आपकी VC है आखिरी या लेट्स से 10वीं. वो जो मैंने शुरू में पॉइंट किया कि अर्ली जनरेशन ऑफ फंड्स, अर्ली जनरेशन टाइम वैल्यू. हाँ, अगर आप उसकी तरफ इशारा करें तो बिल्कुल वैसे ही है. आपके पैसों की वैल्यू जब तक आप वो वहां तक पहुंचेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 साल तक पैसे भरे, तो आप पैसों की तो वैल्यू बढ़ती जा रही है ना. आपने आज 5,000 भरे, अगले महीने अगर आप 5,000 भर रहे हैं तो वो आपके लिए पावर चेंज हो रही है. चेंज हो रही है. और एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको 1 लाख रुपए 2 साल बाद मिलते हैं और 1 लाख रुपए अभी मिल रहे हैं तो बहुत फर्क है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 1 लाख रुपए की आज प्रोजेक्टर खरीदना था कि चले आपने सोचा ये लूंगा, और जब 2 साल बाद आप अभी आप खरीदते थे, पहली मिलती है तो आप ले लेंगे. 2 साल बाद जब बीसी मिलेगी 1 लाख रुपए का नहीं होगा, 1,30,000 रुपए का होगा या किसी और अमाउंट का होगा. तो कमेटी के अंदर सबसे बड़ा नुकसान ये है. और दूसरा नुकसान ये है कि अगर पहले आगे तो भरते हैं. अच्छा, इसके अलावा कुछ और बातें हैं कि रिटायरमेंट के लिए फाइनेंशियल गोल्स मीट करने के लिए बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइफस्टाइल के लिए बहुत सारे लोग करते हैं. रिटायरमेंट का सॉर्ट ऑफ एक अंडरस्टैंडेबल है कि जब आप अपनी जॉब खत्म करेंगे, यू वुड वांट कि आपके पास इतने पैसे होंगे यू कैन लिव अ नाइस लाइफ. लाइफस्टाइल में क्या चीज आती है कि आपने अपना पैसे सेव किए, इन्वेस्ट किया, आपको प्रॉफिट मिला, आपने कोई अच्छी बाइक खरीद ली, आपने कोई अच्छा फोन खरीद लिया. ये सारी चीजें लाइफस्टाइल में आती हैं. इट कुड बी एनीथिंग. कोई आपको एक्सपेंसिव बैग खरीदना है किसी ब्रांड का. मैरिज, एंटरप्रेन्योरल एफर्ट्स, ये क्या आप सोच रहे हैं कि आपको कोई आगे बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए उसके लिए, ये सारे these are some of the many reasons. यहाँ पे choose which security to invest in. Now equity stocks हैं, debts हैं, bonds, bills, derivatives, इसके बारे में थोड़ा सा आगे बात करते हैं. इन्फ्लेशन ग्राफ है जिसके बारे में हमने अभी बात सॉर्ट ऑफ की है. यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो वैल्यू ऑफ मनी 1 लाख रुपए 2009 में थी. अच्छा, ये बेसिकली दिस इज एन एक्चुअल ग्राफ जो कि is from the actual economy.
कि जो 2009 में 1 लाख रुपए थे वो इज इक्वलेंट ऑफ 237 crores एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो उसका अगर देखा जाए तो डबल से भी ज्यादा हो गया एंड विल बी इक्वल टू 557 5,60,000 के करीब रफली इन द नेक्स्ट 10 ईयर, व्हिच टेल्स कि इस इन्फ्लेशन ग्राफ बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर जा रहा है। ये बताने का क्या मकसद है ये मैं आपको जी हमेशा इंक्रीजिंग ट्रेंड पर ही रहेगा। जी इंक्रीजिंग ही रहेगा। अब हमें क्या, तो हम क्या करेंगे, हम इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन डिक्रीज हो रही है। तो अब लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है कि हम महंगाई तो बढ़ती रहेगी हमेशा, तो हम क्या गरीब होते जाएं या अपनी चीजों को रोक लें या क्या करें। तो उसके लिए सारी बात करने का मकसद ये है कि हम सेविंग करें, ठीक है। अपनी वैल्यू ऑफ मनी को किस तरह हम संभाल सकते हैं, वील टॉक अ लिटिल बिट मोर हियर। The value of your money cannot beat inflation by saving only. इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 1 लाख रुपए आज हैं, इन्फ्लेशन रेट चल रहा है तो समझे 9%, 10 साल के बाद उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो डिक्रीज होके कितनी हो जाएगी, विच मीन्स कि आपने अगर सेव नहीं किया इन दैट सिनेरियो आपका तो ये आधे से भी कम पे चले जाएगा। और बट इफ यू इन्वेस्ट, योर इन्वेस्टमेंट विल गिव यू अ रिटर्न व्हिच विल ऑफसेट द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड यू कैन आल्सो गेट बेनिफिट। एक तो ये कि आपने जो सेविंग की उस पे आपको बेनिफिट भी मिल रहा है और लेट्स से डिविडेंड्स मिल रहे हैं और कोई और कंपाउंडिंग हो रही है, तो इट मींस कि आपको फायदा ही फायदा है। बट गिवन द फैक्ट कि यू आर इन्वेस्टिंग राइट, किसी ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो नीचे जाते जा रहा है और ये किसी ऐसी कंपनीज के लिए जो कंपनी बुरे हालात की तो जा रही है, देन इवेंचुअली एक और फैक्टर है कि आपका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो इससे ज्यादा होना चाहिए 9%, डिस्काउंट रेट से तो ज्यादा होना चाहिए ना आपका रेट ऑफ रिटर्न। अगर आपका इन्फ्लेशन, अगर आपका रिटर्न इन्फ्लेशन से कम है तो हाँ, that's a given, yes. कंपाउंडेड प्रॉफिट, अच्छा कंपाउंडिंग की बात हो रही है यहाँ पे। कंपाउंडिंग क्या वो पता ही हो क्या होता है आगे ये रूल ऑफ 73 पता है, 72 पता है किसी को क्या होता है? रूल ऑफ 72 बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, मेजॉरिटी मुझे भी नहीं पता था, बट सबसे इससे इजीएस्ट। ये एस्टिमेट क्या करता है, ये आपको बताता है कि आपका जो अमाउंट है कितने दिन में डबल हो जाएगा, ठीक है, 25 दिन में डबल। तो अच्छा, how it works. The 72 rule is used to estimate an investment doubling time given a fixed annual rate of return. You need a few things for this. आपका टोटल अमाउंट ऑफ वो कितना है जिसको आप करना चाहते हैं, आपको यू ऑल्सो नीड टू नो कि कितने अरसे में वो आपको पता लगाना है, एंड देन यू हैव टू नो कि इंटरेस्ट रेट क्या है, ठीक है। दैट शुड बी फिक्स्ड एनुअल रेट ऑफ रिटर्न। वो फ्लक्चुएट करेगा तो यू विल नेवर नो, फॉर्मूला वुडंट वर्क ना इन दैट केस। तो हाउ फॉर्मूला विल बी this 72 is just a number that you have to always put in order for this to work. 72 divided by 25 and then this is 20, ठीक है, that is rate of return and then eventually आपको पता चलेगा कि 3 साल में you get the 2.88 this is roughly है। मतलब इसका मतलब है कि आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट बैक टोटल 1 लाख में दो करते हैं तो एग्जैक्ट अगर बताएं तो ये 1 लाख जो है वो 3 साल में 2.88 मतलब रफली 3 साल आपका कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो यू विल डबल योर इन्वेस्टमेंट इन 3 years and have rupees 200,000 again given the fact that the fixed amount the interest is fixed, ऊपर नीचे जाएगा तो नो, the formula would not work. रूपी कॉस्ट एवरीथिंग ये चीज होती है, इसमें कुछ फैक्टर्स हैं, आई वुड जस्ट ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि एक तो ये चीज है भाई कि बहुत ही ऑब्वियस है, फंडामेंटल क्या है सबको पता है कि बाय लो सेल हाई, यानी 70 शेयर खरीदा महंगा बेचा सबको पता है, यू सेव इन दैट, ठीक है। लेकिन एक चीज है जो इसके बाद वाली स्लाइड में है, यहाँ पे ये बता रहे हैं। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ, आपके पास यू हैव 50,000 रुपीज और आपको आई गिव यू एन ऑप्शन कि अपना अकाउंट खुलवाएं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। वुड यू लाइक कि आप 50,000 रुपए भी इन्वेस्ट कर दें या 10,000 डाल दो और वेट करें कि मैं 1 महीने बाद 2 महीने बाद बाकी डाल दूंगा, इस तरह डाल दूंगा, कभी डल गए। What would you prefer? Would you prefer to invest all the money all together या थोड़ा थोड़ा करके डालना चाहिए? Depends on the risk appetite.
हाँ। ठीक है, फिर ये देखेंगे ना कि हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं। लेट्स से ये रिस्क एपेटाइट है, आपको गया नहीं, गए पैसे आए पैसे, आपको इतना फर्क नहीं पड़ता, क्या आपका क्या कॉमन सेंस क्या बोलती है क्या करना चाहिए? अगर ऑप्टिमिस्टिक है मार्केट के आउटकम से तो आपको इन्वेस्ट करना फुल इन्वेस्टेड नहीं, आपने बताया नहीं करेंगे, किसने कहा नहीं करेंगे? एक साथ थोड़ा करेंगे रीजन Risk है। अपने लिए तो पैसे चाहिए। अपने लिए आपके बैठे पास सारे इन्वेस्ट करने के लिए तो आप डाल भी सकते हैं, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट भी करना चाह रहे हैं अपनी डेली एक्सपेंसेस, दैट्स से कि आपकी डेली एक्सपेंसेस कवर्ड है, अलग पड़े आपके पास ये 50,000 रुपए, मुझे डन तो करनी है ना फिर आप। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज होती है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, वो एवरेजिंग किस तरह काम करती है? हमने यहाँ पे टोटल अमाउंट इज, यहाँ से देखते हैं फर्स्ट मंथ जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, 1 2 3 4 6 महीने, ठीक है। इंस्टेड ऑफ आपने एक साथ इन्वेस्ट किया 1000 2000 3000 30,000 है, ठीक है, तो 30,000 या तो आप शुरू में कर दें या नहीं करें। नहीं करने से आपको क्या होगा? इफ यू आर इन्वेस्टिंग 5,000 शुरू में, शेयर प्राइस थी उस वक्त, आपने फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी का शेयर खरीदा 38 रुपीज की उसकी शेयर प्राइस थी, आपके यूनिट्स परचेज आपके हुए उतने पैसों में 131.58, ठीक है। अगले महीने आपने क्या किया, आपने 5,000 रुपए की फिर इन्वेस्ट की, आपके शेयर प्राइस जो है वो 31 का हो गया, कितनी यानी 70 हो गया, तो आपके यूनिट कितने सेम कंपनी की बात है। सेम इट कुड बी डिफरेंट, इट कुड बी एनी, आप नहीं किसी और कंपनी का रिलेशन आपने वो लिया 38 का, यहाँ पे आपने आइडियली हम अगर क्योंकि हम यहाँ पे नंबर की बात करें, हाँ सेम कंपनी की बात करेंगे, सेम ही बात करेंगे, ठीक है। देन 31 का हुआ, आपके 161 यूनिट आ गए, और नीचे चला गया आपके 172 आ गए, थोड़ा बढ़ गया 32 हो गए, तो करते 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 वैसे अगर देखा जाए कम हो रहे हैं, आपको क्या हुआ एट द एंड ऑफ द डे आपकी शेयर की प्राइस ये है, लेकिन 9,986, ठीक है, अमाउंट आपने 30,000 इन्वेस्ट किया और आपने 986 यूनिट्स खरीदे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका वो सोर्ट ऑफ आपके वो पैसे हैं जो आपके शेयर्स की सूरत में आपके पास मौजूद है। बट अगर आपने यहाँ पे 30,000 रुपए की परचेजिंग की होती तो ये 38 पे आप परचेजिंग करते, ठीक है, यहाँ बढ़ रहा है कम हो रहा है तो आप उसमें नुकसान हो सकता था आपका। लेकिन क्या होता है कि बाद में अगर क्योंकि वो कम ज्यादा होता है, यू कैन एवरेज इट आउट अगेन, कीपिंग इन माइंड कि आप मार्केट्स को कीप एन आई ऑन द मार्केट। अगर आप देखें फॉर एग्जांपल कि यही वाला शेयर है, ये लेट्स से 26 का हो गया है और आपको पता है कि ये यू हैव एन आई ऑन द मार्केट, आपको पता है कि 31 का 38 का होगा, देन इन दैट केस यू कैन इन्वेस्ट अगेन, आई वुडंट से पूरा 30,000, मे बी इन्वेस्ट 20,000, बट फॉर दीज थिंग्स यू हैव टू हैव अ लिटिल नो हाउ ऑफ द मार्केट। अच्छा, PSX की जो प्रोडक्ट्स है उसमें से एक यू कैन कॉल इट अ प्रोडक्ट, इट्स नॉट अ प्रोडक्ट एज पर से, इट्स अ डेटा पोर्टल, मौका मिले घर जाके देखिएगा, psx.com.pk/dps स्टैंड फॉर डेटा पोर्टल। डेटा पोर्टल के ऊपर ये सारे नंबर्स, कौन सी कंपनी ने क्या काम किया, किसके शेयर कितने के चल रहे हैं, ओवरऑल वहाँ पे 5 साल तक का डेटा और उससे पुराना डेटा आपको मिल जाएगा। जितने भी एनालिसिस करने वाले लोग एनालिस्ट बैठे होते हैं जो अखबारों के अंदर कॉलम्स लिख रहे होते हैं, या वो लोग जो ब्रोकर्स हैं या और एसेट मैनेजमेंट कंपनी में काम करते हैं, वो लोग सारे वक्त खोल के बैठे रहते हैं, कीप ऑन लुकिंग एट दोस थिंग्स, बिकॉज दोज आर द थिंग्स जिसकी बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि हम अपने कौन से शेयर कहाँ से खरीदें, किधर से निकाल रहे हैं, किस क्लाइंट के लिए हमें क्या करना चाहिए, बिकॉज ब्रोकर एट द एंड ऑफ द डे sort of your only वो कि जो आपको हेल्प कर रहा है, बता रहा है, अपना तो आपने इनपुट दिया ही उसको, लेकिन he will be telling you कि वो बैठा हुआ मार्केट के अंदर, he can tell you better, but again you need to have an eye on the stats। बहुत दफा ऐसा होता है, वो अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, ब्रोकर ये लिक्विडेट कर जाए या खत्म हो जाए या ब्रोकर कोई फ्रॉड कर दे, तो वो भी होती है चीजें इन द रियल वर्ल्ड, बट इट्स बेटर कि आप यू कीप एन आई ऑन योर थिंग्स, कि आपको पता होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज के बारे में भी अभी 2-4 चीजों की तो बात हो गई, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स की बात हो गई, सिक्योरिटी एंड बॉन्ड्स की सब बता रहे हैं थोड़ी देर पहले। करेंसीज में अच्छा एवेन्यूज क्या है कि कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? करेंसीज के अंदर बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं। करेंसीज में कैसे इन्वेस्ट करते हैं? मोस्टली डॉलर खरीद लिया, डॉलर बढ़ेगा ही भाई, हमारी करेंसी नीचे जाएगी, इवेंचुअली दे विल सेल, हो जाएंगे, उन्होंने कैश ले लेंगे और इस तरह से हो जाएगा। Not sarcastically saying, sort of. it is a reason। हाँ, क्योंकि लोग, even I know a lot of people who do that, मैं हैरान होता था, ये क्या बात है, डॉलर क्यों खरीद क्या, ये कैसी इन्वेस्टमेंट है? कहता है इन्वेस्टमेंट है, मैं हंसता था, फिर बाद में एक दिन देखो ये देखो। हाँ,
So it's one of those values. Bank deposit जो है वो मोस्टली अगर तो आपकी करंट अकाउंट है तो यू डोंट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट. करंट अकाउंट में तो कुछ है नहीं. सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं तो देन यू गेट सम प्रॉफिट उसके ऊपर. रियल एस्टेट it's a very good investment avenue, but again it's not for the majority of people. Again बहुत कम लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं. कम से मेरा मतलब you know what I mean, मैं नहीं करता जैसे छोटी अमाउंट से कर नहीं सकते. छोटी अमाउंट से कर नहीं सकते. और बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसके. एक ये भी है कि वो लिक्विडेट नहीं कर सकते इतनी आसानी से. आपको 10 लाख की प्रॉपर्टी, आपको 2 लाख की जरूरत पड़ेगी, क्या आप प्रॉपर्टी बेचेंगे अपनी? एकदम बेच नहीं सकती. काफी हाई है. सारा पैसा हम कुछ रियल एस्टेट में लगा रहे हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. क्या इससे पूरी इकोनॉमी खराब नहीं होती? सर हो रही है और हो गई भी है. ये जो पिछले दिनों प्राइस इन्फ्लेटेड है ऐसे रियल एस्टेट. मतलब अगर यही पैसा प्रॉपर्टी में ना लगाऊं तो मुझे लगता है कितना टाइम पीरियड है वहां पर, तो ये पैसा डेफिनेटली बैंक में जाएगा या स्टॉक मार्केट में जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी. देखो सर आप इसके अंदर थोड़ा सा हमें we have to go to the economics. Real estate is an investment avenue and it should always be considered as an investment avenue. बल्कि यहाँ पर ही सारी दुनिया में ठीक है. When I went to New York, मुझे एक बंदे ने बताया कि यार मुझे पेंटहाउसेस आ रहा है. At one point in time, it used to worth $100 million. $100 million for a penthouse. और बोलते था कि इस पेंटहाउस में कभी भी जब से ये बना है कभी साढ़े 6 महीने लोग उनके पास होता था, इन्वेस्टेड होता था, 6 महीने नहीं रहते थे. और एट टाइम्स ऐसा भी होता था कि पूरे साल में शायद 2 महीने. देखिए तो इन्वेस्टमेंट है आपके लिए, इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्टर के लिए दूसरी अच्छी बात है. मैं बात कर रहा हूँ एक वर्ल्ड इकोनॉमी की. अगर मेरे इकोनॉमिक साइकिल जितनी अच्छी रियल एस्टेट से शुरू हुई है ये कहीं से नहीं. क्यों? एक घर बना के कितनी इंडस्ट्रीज चल रही है. सिर्फ एक घर बना अभी कुछ बना रहे हम तो प्लॉट ले अब ये तो अगेन मैंने आपको स्टार्ट में एक बात की थी नियर. आपने किस मकसद से किया? अगर उनका मकसद ये है कि यू एक्चुअली वांट टू ग्रो तो रियल एस्टेट से अच्छी जगह नहीं है. लेकिन सबसे बुरा मेरा लगा कि आपका रियल एस्टेट की 2008 का जो क्राइसिस आया तो वो रियल एस्टेट के इंश्योरेंस कंपनी यार ने वो मिस्टर 2008 के अंदर बहुत सारे वो इंश्योरेंस कंपनी से अल्टीमेट जो इन्वेस्टमेंट थी रियल एस्टेट में. सर मैं आपको बहुत सारे अगर हम बहुत इकोनॉमी में चले जाएंगे जो मैं जाने के लिए तैयार हूं. मुझे कोई मसला नहीं है. यहाँ बेचारे हाँ मैं एक चीज स्पेसिफिकली से ऐड करना कि प्रॉपर्टी की वजह से डैमेजेस ओवरऑल होते हैं. ये जो इकोनॉमी के अंदर आपके कहीं ना कहीं जो टैक्सेस वगैरह का मामला जो पिछले दिनों आपको पता सुना होगा जब बेनामी का एक वो चला था कि आप अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो ठीक है आप बताएं कि कौन सी प्रॉपर्टीज है और उसके ऊपर कितनी बड़ी कैंपेन चली थी पीटीआई की गवर्नमेंट जब आई थी. कहीं ना कहीं इस पर बहुत ज्यादा काम हुआ लेकिन लोग यार स्टिल दे डोंट वांट कि हम करें. रीजन बीइंग डिक्लेयर करने से ऐसा देना पड़ता है और शायद वादा है तो डिक्लेयर करना पड़ता है. डिक्लेयर करना डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में आपको आना पड़ेगा. जी जी जी. It is the only avenue where people can easily jump in your money. Yeah, jump in your money. जी तो आई थिंक उस कहीं ना कहीं उनकी बात मुझे लगा कि वो एंगल हो सकता है. डेवलप कंट्री में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं. लीडिंग लोग काफी लोग शेयर चाहिए इन्वेस्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. उसमें छोटी-छोटी इन्वेस्टमेंट एक फंड है हमारे पास भी. मतलब लार्ज स्केल पे करने के लिए आपका इनिशिएट किया है गवर्नमेंट नीड ऐसे ज्यादा बड़े स्केल पे करने के लिए इनिशिएट किया है हम. इसके देखिए बीइंग सीडीसी हम इनिशिएटिव ले ही नहीं सकते बिकॉज़ हमारा काम अगर मैंने इनिशिएटिव ले लिया ना तो इट वुड बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. सीडीसी में गवर्नमेंट लेवल पे नहीं होता. क्या गवर्नमेंट की बात गवर्नमेंट की सारी बातें क्यों पूछते हैं? गवर्नमेंट को कैसे पता? अभी डाउन में मांग कर रहे हैं. Actually, इसमें इन्वेस्टर्स जो है जो रीट्स है उसकी जो उसका पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपके पास बहुत जो ओरिजिनल जो लेके आने चाह रहे हैं रीट इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा है उसके पास भी प्रॉपर्टी हो वो रेंटल्स वहां से आए और फिर वो रेंटल्स आपने यूनिट्स लिए हो वो यूनिट्स की शक्ल में आपको एज ए डिविडेंड आपके पास ट्रांसफर होता है. तो उस सारे सिलसिले के लिए ऐसा इन्वेस्टर का आना जरूरी है. रेगुलेशंस उसकी आ सकती हैं उसके लॉज बन सकते हैं बने हुए हैं और हैं भी क्योंकि एक रीट चल भी रही है लिस्टेड भी है और उसमें भी उसके बाद अब नेक्स्ट इन्वेस्टर को आने की the environment is there, regulations are there. Now that investor needs to come in कि वो इस प्रोजेक्ट को इतना विजिबल देख रहा है he wants to invest.
Varia could have been a very good deal. लेकिन REIT का जो dividend सीरियसली Varia could have been a very good deal. कराची में कई billion भाई बोलो Varia could have been a very good deal. Provided सारी legal formalities जो सारी चीजें करना, otherwise it could have been a very good potential. और अगर फॉर एग्जांपल आपको रियल एस्टेट के एग्जांपल के लिए सिर्फ इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर जस्ट इमेजिन वेरी अपने फुल प्रॉफिट पे काम स्टार्ट आपके जितने सीमेंट और स्टील के शेयर्स हैं ना मैं आपको गारंटी देता हूँ ये 4 to 5 टाइम्स हो जाएंगे उसके हाँ बेसिकली मैं ये नहीं कह रहा कि रियल एस्टेट जो है वो अच्छा इन्वेस्टमेंट, मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग जो है लैंड खरीद के रखते रहते हैं और लैंड महंगी होती रहती है, दोबारा अगेन कौन खरीदता है? एक और इन्वेस्टर घर बनाने वाला नहीं खरीदता। उसके दो प्रॉब्लम है, एक तो ये सारा पैसा मैंने को डू अ बिजनेस लाइक यू जनरेट जॉब एक्टिविटी, मैंने पैसे का फ्रॉड खरीदा, सेम द थिंग दैट यू आर डूइंग। उसका एक नुकसान ये है कि हमें एक्टिविटी खराब हो रही है, सेकंड नुकसान उसका ये है कि ऐसा बंदा जिसको वाकई घर बनाना है जब वो लैंड खरीद से चलाता है बिल्कुल सही यही वजह है अच्छा क्यों इन्वेस्ट करना वजह ये नहीं है बैंक क्यों हो रहा है डिमांड इसलिए कि आपकी वहाँ पर ब्लैक इकोनॉमी प्रॉस्पर हो रही है। दिस इज द ओनली एवेन्यू जहाँ पर आप बिलियंस ऑफ रुपीस डंप कर दोगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ब्लैक इकोनॉमी है। ये जो बेनामी का कॉन्सेप्ट एक आया था तो उसका मकसद ये था कि इसको आप लीगलाइज करो। वंस आप लीगलाइज करोगे ना तो क्यों अभी प्रॉपर्टीज डाउन क्यों आज की तारीख में प्रॉपर्टीज डाउन क्यों? स्टॉक मार्केट की बात कीजिए, लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट में शेयर क्यों परचेज कर रहे हैं? A lot of investors in stock market काफी क्षेत्र specifically are only doing setup के बस वो खरीदो महंगा हो रहा है they don't know what company does, उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें मार्केट में बस उन्होंने सिर्फ सेटअप। तो यही हम प्रॉपर्टी में कर रहे हैं, हम क्यों खरीद रहे हैं प्रॉपर्टी? सिर्फ सट्टेबाजी शुरू की चलिए कोई बात नहीं, इतना बड़ा मसला नहीं है। I'll take it towards the closing now. ये सारी चीजों के बारे में हमने बात कर ली है। दो तीन चीजें रह गई। इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में मोर और लेस वही होता है, करेंसी के अगेंस्ट हम लोग एक्सचेंज करते हुए गेट सम प्रॉफिट आउट ऑफ इट। कमोडिटीज, आई थिंक आप लोगों को पता है पाकिस्तान मर्केंटाइल जो कमोडिटी हम शेयर्स में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज शेयर्स में डील करता है, कमोडिटीज में करते हैं। जैसा आपका आटा दाल अंडे गोश्त ये सारी चीजें जो आपकी आती है वो कमोडिटीज में मोस्टली कंपनीज वगैरह देख रही होती है इनको। एक ये होता है कि जितनी ब्रोकरेज कंपनीज है वो मोस्टली कहीं ना कहीं दे आल्सो डील इन दिस, उनके पास वो भी अकाउंट्स होते हैं, तो दे आर आल्सो पीएमएक्स के भी वो होते हैं क्योंकि दे वांट टू कवर इट फ्रॉम ऑल एंगल्स। नेशनल सेविंग स्कीम जो है वो एंड बॉन्ड्स वगैरह ये सब चीजें होती हैं। क्रिप्टो करेंसी जो है वो आप लोगों को पता ही है। Would you like to invest in cryptocurrency? Account allowed नहीं है, मना कर क्यों allowed नहीं है? Allowed नहीं किया, क्यों नहीं allowed? इतनी अच्छी चीज तो है, you get रेगुलेटेड नहीं है। एक वजह पता है किसी को रेगुलेटेड नहीं है। जो रेगुलेशन है, जो रेगुलेटर है उससे कंट्रोल से पैसा बाहर निकल जाएगा। मैं पैसा आपको बैंकिंग के थ्रू दूंगा, जी सही बात है। on cryptocurrency I can transfer the money and there is no trace, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती। अब सबसे ज्यादा जो कॉल सेंटर फ्रॉड हो रहे हैं कनाडा में, जो लोग फोन करते हैं कि जी वो आपका अटैच बॉडी से सोने लगा दिया, तो पैसा लेते हैं बिटकॉइन के थ्रू एंड द गवर्नमेंट कैन सिंपली डू द थिंग। पैसा किसके पास गया? बहुत फ्रॉड्स के लेवल तो उसमें बहुत हाई रहा। और दूसरा बड़ा मसला है कि कहीं ना कहीं बीइंग हम लोग पाकिस्तानी हैं या मुस्लिम स्टेट, तो हमें मैं जो बात करता हूँ उसकी ये कि इसमें जितनी भी ट्रांजैक्शन होती रही है यू कैन नेवर टेल कि बिटकॉइन जितने भी हैं या ये क्रिप्टो करेंसी ब्लैक मार्केट के अंदर बहुत यूज किया गया है, करते गए लोग पिछले दिनों डार्क वेब के ऊपर एक्सटॉर्शंस के लिए, स्मगलिंग के लिए, यू नेम इट। तो ये सारी चीजें अब यू डू नॉट नो आपने तो किसी अच्छे मकसद से लियोगा तो मैं बिटकॉइन लेता हूँ, मैं लूंगा 10 साल बाद बेचूंगा और 5 साल बाद बेच के मैं बाय सम कंप्यूटर मेरे बच्चों के लिए or something like that, but you do not know where the money is coming from. That's also one of the factors कि ये it's in the gray area, it's always been. अच्छा, long term investment और short term investments, long term कौन से हैं? Stocks हैं, interest paying bonds हैं, mutual funds हैं, NSS which is again national security savings वाले, exchange traded funds हैं, जो ETF जिनकी बात हुई थी ना अभी,
which are not launched yet, but they will be there soon. By the way, this is not going to be, अच्छा, जो indices की बात हुई थी, जो 7 indices थे, मैंने आपको बताया 2 और ऐड हुए हैं. वो 2 कौन से हैं? Exchange traded funds being one. दूसरा कौन सा है? दूसरा भी वही है. वो ऐसे कि there are 2 other different organizations जो NIT and UPL उनके अलग-अलग इंडेक्सेस होंगे. तो हमारे पास जो वेबसाइट पे ड्रॉप डाउन आता है उसमें आप कभी जाके देखिएगा तो 7 है वो 7 की जगह तो बढ़ जाएंगे उसमें. NIT भी लेकर आ रहा है. जी, तो there are 2 organizations जो इस पे काम कर रही हैं, तो 2 indices ऐड हो रहे होंगे. इतनी टेक्निकलिटीज मैं जाऊंगा भी नहीं और आई एम नॉट वैसे उतना टेक्निकल हूँ भी नहीं मैं कि मैं बता दूं कि वो Y2 ये इस तरह से, बट वो क्योंकि अभी लॉन्च भी नहीं हुआ, तो लॉन्च होगा तो इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिलीज होंगे. इफ यू वांट टू नो अबाउट इट मैं भी पढ़ूंगा, आप लोग भी पढ़िए. पीयर टू पीयर लैंडिंग में बहुत सारी चीजें हैं. ये उसको भी कह सकते हैं कि मैंने आपको पहले दिया आप लोगों को, ये वो भी इट कुड बी एनीथिंग. पाकिस्तान में हम कोई ऐसा ऑप्शन पोर्टल नहीं बना सकते ऑप्शन नहीं, बट वो ऐसे ही ना कि मैंने आपको पैसे दिए और आप लोग ये दिस इज दैट पीयर टू पीयर वही है. शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स का आपको पता है जिसके अंदर जैसे कि कुछ बॉन्ड ऐसे हैं जिनके वजह तो हाई इंटरेस्ट पे है वो है, आपसे तो मैं भी खरीदता हूँ आगे जल्दी से बेच दिए. लेकिन बहुत सारे लोगों का जो एक कॉन्सेप्ट है वो सिंस जितने भी लोग हम यहाँ बैठे हैं इस टाइम के भी हम लोग भी क्लियर दिस कि स्टॉक मार्केट के अंदर नंबर इज नॉट सट्टा. आए पैसा डाला ऊपर हुआ पैसे निकाल लिए, वो जो ड्रामे में दिखाया वो सब इट्स नॉट फैक्चुअल. I read a report some time back in some online magazine. एक this analyst उसने ये बताया उसने कैलकुलेशंस करके बताई कि ये शहवाग केमिकल ये वो ऐसे होता, तो इतने दिन के अंदर उसने कैलकुलेट करके बताया इट्स नॉट पॉसिबल कि वो ये सर्टिफिकेट से अपना टैक्स 5% था उस वक्त, 5% के सर्किट ब्रेकर्स में नहीं. तो अब हमारे पास ऑडियंस ड्रामा देखती है ना उसके लिए उनके लेकिन उन्होंने अवेयरनेस क्रिएट की, आप लोगों का काम आसान हो गया. यार वैसे उसके बाद मार्केट ऑडियंस के स्मार्टनेस के उसके लेवल के ऊपर मुझसे तो आप कमेंट ले सकते हैं. बट हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, वो पूछते हैं आपके जरूर कोई ना कोई सवाल वो जो हुआ था दानिश ने ऐसे पैसे कमाए थे हम क्या करें. जैसे हमारा केमिकल बाकी कोई केमिकल कंपनी है तो अगर है तो हमें बता दें कितने का शेयर चल रहा है कैसे लेते हैं. एक तो ऐसे भी तैयार है कि हमें नजर नहीं आ रहा है आगे छुपा के पीछे कहीं हाइडिंग है कुछ शहवाग केमिकल जिसमें हम डाल सकते हैं. फिर उन्होंने ये हुमायूं से ही गया था सीढ़ी चढ़ के ऊपर गया था, ऊपर क्या है वैसे उन्होंने शहवाग के लिए जो ऑफिस है वो सीडीसी का ऑफिस है. सॉरी आपके लिए मेजरमेंट से बढ़ के भी कर सकते हैं जो कि उन्होंने ऑफिस है B6 की बिल्डिंग है. देन B6 तो स्टॉक एक्सचेंज के लिखा है, शहवाग के अंदर लिखा है वो लिखा मतलब थोड़ा सा हटा हुआ है हेड बिल्डिंग में सेट बाहर से लिखा है बाहर से तो कोई भी लेकिन हमारे ऑफिस में है ये पढ़ने भी आपने क्या. Anyways, why should you invest in the stock market? Become a shareholder. Shareholder होने का क्या मतलब है? Shareholder किसी कंपनी है, आपने उसके शेयर होल्ड कर लिया मींस कहीं ना कहीं own a certain asset उस कंपनी का. And then you a lot of companies also give dividends. आप dividends के बारे में आपको पता है Return on shares. Return on shares. Profit of shares. Distribution of profit. ठीक. And then we have got liquidity. Liquidity क्या होती है? To sell the share and get the money. Liquidity मतलब वो share capital ऐसे भी नहीं आपके वैसे लाइक रियल एस्टेट इसके अंदर लिक्विड होता है आपके लिक्विड होता है. यानी सारी ये लिक्विडिटी इसकी अच्छी होती है. हाँ. कन्वर्जन इनटू कैश आसान है, आसान भी है और फास्ट. एंड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो. अभी थोड़ी देर पहले बात की, फॉर एग्जांपल ETF ले लेते हैं या नहीं लेते. आप किसी ने मुझसे सवाल किया हमारी कॉन्फ्रेंस जिसमें वो पूछ रहे थे क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं ETF नहीं खरीदूं पर उस ETF की बास्केट में फॉर एग्जांपल ये 4-5 कह रहे हैं इतने मैं वो खरीद के खुद ले लूं. उसके ऊपर बात हो रही थी. यू कैन इवन डू दैट. इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू डू इट, लेकिन यू कैन आल्सो डू दैट. कहने का मतलब है कि डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, थोड़ा इन्वेस्ट किया थोड़ा जी So transaction cost होगी वो. एंड फॉर द टेक्निकलिटीज इट्स नॉट अ गुड आइडिया. दैट्स व्हाट आई थिंक. बट अगेन वो एक मिसाल दे रहा था. एज एन इन्वेस्टमेंट बस ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हम क्लोज करेंगे. इस ग्राफ में नहीं जाऊंगा मुझे टेक्स अबाउट 20 मिनट्स टू एक्सप्लेन दिस. एक चीज है वो अभी थोड़ी देर पहले आपने मेंशन किया था रिस्क टॉलरेंस.
आप लोगों के हिसाब से, स्पेशली आप काफी बैठे हैं, आप लोगों के हिसाब से आपको क्या लगता है कि वो कौन सा हमारी लाइफ के अंदर फेज है जिसमें सबसे ज्यादा रिस्क टॉलरेंस ज्यादा होता है? यानी टॉलरेट यानी अगर नुकसान होता है मुझे तो मैं उसको बर्दाश्त करने की मुझ में ताकत ज्यादा है। ओवरऑल मेरी लाइफ स्पैन में आपको क्या लगता है आप लोगों को क्या होता है? 30 years से 40 शादी से पहले इट्स 20s ऑफ कोर्स वेरी कौन से रिस्क की बात है? और कोई इसके अलावा ये ब्रैकेट शादी वाली बात तो उन्होंने कंक्लूड करके उन्होंने कहा कि बिफोर 40s I hope you won't stop the retirement. नहीं, अगर वो कुछ थोड़ी सही है, that is completely okay. 20 से 30 बिल्कुल सही है. 20 से 30 है। थर्टी का आप इतना कमाना शुरू नहीं करते। The one starts earning after 30. मतलब आपकी अच्छी अर्निंग शुरू होती है 30 अब। तो आप उस पीरियड पे हाँ ये गोइंग ओवरऑल की सब सही बात है, बट इससे भी ये है कि जब आप नहीं कमा रहे हो और आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा रिस्क टॉलरेंस है। तो उसमें दुख भी नहीं होगा आपको, नुकसान भी नहीं है, 2-4 दिन बढ़ेंगे और क्या होगा इससे। ठीक है, that's all. Hopefully you learned something, a thing or two from this presentation. And if you have any questions, info@psx.com.pk वेबसाइट पे जाके फोन नंबर भी देते हैं, you can call us. कोई क्वेरी है ईमेल करते हैं या फिर हमारा पेज है facebook.com/Pakistan Stock Exchange. जी सर, क्या पाकिस्तानी इन्वेस्ट इन सम फॉरेन सर ओवरसीज पाकिस्तानी कैसे यहाँ कर सकते हैं ये सर? आई डोंट नो सर, आई डोंट नो द टेक्निकलिटीज। ओवरसीज पाकिस्तानी कैन इन्वेस्ट हियर, दैट आई नो फॉर श्योर। यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करने के लिए आपको रजिस्टर होना पड़ेगा एज एन इन्वेस्टर। यहाँ पर जैसे अगर आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है यूएस डॉलर यहाँ पर इन्वेस्ट करना है तो ये एक्स्ट्रा इन्वेस्टर लाइक you will have to be registered in New York Stock Exchange or whatever. I'm pretty sure कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को हर जगह चाहिए होते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स के बगैर तो कोई मार्केट जैसे कि इंटरनेशनल ब्रोकर्स हैं, उनके पास आप जैसे कि रजिस्टर्ड फॉरेक्स में काम करता है, फॉरेक्स तो हाँ वो तो एक डिफरेंट बॉल गेम, वो तो रजिस्टर्ड होके काम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप जी काम कर सकते हैं। हाँ, बट मैं वो टेक्निकलिटी मुझे नहीं पता उसकी, तो इसलिए मैं फॉर श्योर नहीं बोलता कि कर सकते होंगे, क्योंकि हमारे पास वेबसाइट पे भी पूरा सेक्शन है कॉल्ड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी। वहाँ पे पूरा एक हमने गाइड टाइप का बना के डाला हुआ है, इसके अंदर यू कैन सी कि कौन कौन से करवाना है, तो वो सारी चीजें मौजूद है। दैट वी नो कि हम पीएसएक्स में तो इन्वेस्टमेंट्स करवाते हैं, अब जो कि बाहर होगा फॉरेक्स पे ऑफ कोर्स इज वन ऑफ द ऑप्शन। अच्छा, एक और जो बेसिकली हमारा जो टर्नआउट रेशियो का स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई करने का, वो बेसिकली क्या है कि जो इन्वेस्टर है ना उसके पास इतनी अवेयरनेस नहीं है कि मुझे टेक्निकलिटी जान रही है। मिसाल को मैं फाइनेंस का बताऊं, मुझे पता है कि दूसरी कंपनी किस तरह से जा रही है। कुछ बंदे हैं वो स्टार्टिंग में कुछ इन्वेस्टमेंट होती है वो कर देते हैं और पता नहीं चलता गलत इन्वेस्टमेंट करके वापस आउट करते हैं। जैसे कि कहते हैं ना एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस लोगों के अंदर। अब हम लोग सबके सब ट्रेंड सेटर है, क्या आज के दिन ये शेयर बढ़ रहा है, ये 5 दिन देख रहे हैं, फॉलोअर्स है, तो वो बेसिकली हम ट्रेंड को देख कर ही चल रहे हैं। मिसाल के तौर पे कि भाई पॉलिटिकल सर्कमस्टांस हो गया या कुछ भी हो गया, तो आप लोग खुद अकाउंटेंट्स हो, ऑब्वियसली फाइनेंस के फील्ड से हो, कितने आपने वेंचर कैपिटलिस्ट्स पाकिस्तान में बहुत क्यों? बिकॉज वी आर फॉलोअर्स, हम इनिशिएटिव्स नहीं लेते। मैंने आपको बताया ना, आपको दिखाया है कि भाई 270 मिलियन की पॉपुलेशन है, आपके पास सबसे ज्यादा क्या हो आपके इंडिया, ईरान, बांग्लादेश, चाइना तो चलो बहुत दूर है, इंडिया 1.5% and 0.1%. So the problem is that's the problem. We are not taking any step to solve that problem. आज भी आप टाइम निकाल के देखें स्कूलों की जो कॉलेज पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, दैट इज ओनली वेस्ट ऑफ टाइम। मैं तो स्कूल में भी रिसर्च सब घर पे पढ़ा दूंगा, दैट इज ओनली वेस्ट ऑफ टाइम। मतलब आप ना फाइनेंशियल लिटरेसी क्रिएट कर रहे हैं, दुनिया में टैक्स कहां से कहां लगा गया, मुझे कोई पता नहीं क्या पढ़ाया जा रहा है। इसमें जो मैं थोड़ा सा मैं आपको एक इनसाइट, सिंस आई हैव बीन इन इन्वेस्टिगेशंस एज हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि वी लैक
फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या हम उस कंपनी के बारे में जानना भी नहीं चाहते। और जो लोग आते हैं वो हमें आके कहते हैं कि हमें तो ये कहा गया था कि 5% फिक्स रिटर्न मिलेगा और हमें मिल भी रहा था, हमारे कलीग ने भी कहा, हमने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, अब आप उसमें ग्रीड का एलिमेंट बहुत ज्यादा। इस तरह के जितने भी सिनेरियोज हैं, आपने अभी फॉरेक्स की बात हुई कि फॉरेक्स में पाकिस्तान में फॉरेक्स में नहीं आप इन्वेस्ट कर सकते। पाकिस्तान में जो कमोडिटी एक्सचेंज है वहां पे भी करेंसी विद रिस्पेक्ट टू कमोडिटी जो है आपको उस तरह के फ्यूचर्स हैं, आपको डायरेक्ट करेंसी के फ्यूचर्स नहीं है आपके पास अवेलेबल। और ऐसा भी हमारे पास ऐसे केसेस देखने में आया जिसमें लोगों को कहा जाता है जी आप डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं, सामने वो नाम रखते हैं एससीसीपी का, टीमेक्स का, और फिर इन्वेस्ट आपसे करवा देते हैं बाहर किसी फ्यूचर मार्केट में। ठीक है, मतलब करेंसी फ्यूचर्स या उसके ऊपर ऑनलाइन जो डॉलर में ट्रेडिंग वगैरह होती है, और जब लॉस हो जाता है तो वो लोग भाग जाते हैं। देन पीपल यूज्ड टू कम टू अस कि हमारे और उसके अंदर यू वॉन्ट बिलीव बिलियंस ऑफ रुपीस की इन्वेस्टमेंट होती है। आप स्टॉक मार्केट में नहीं कर रहे, आप सेफ हेवन्स में नहीं कर रहे, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ग्रीड। ये एक अलमिया इसको कह रहे हैं कि हम लोग वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पे हम बिलियंस ऑफ रुपीस का हम ऑलरेडी पाकिस्तानी अवाम जो है has already faced that fraudulent activity और वो उनकी जो जमा पूंजी है that has been wasted। तो ये बहुत बड़ा एलिमेंट है कि जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की नॉलेज है उसके लिए हमें खुद भी थोड़ी सी एफर्ट करनी है और खुद देखना है कि यार ये प्रोडक्ट है या नहीं है। आपको इस तरह से ले लेना यार। ईरान स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शायद भी बैठने के लिए ईरान स्टॉक एक्सचेंज में पीएचडी नजर आता है फाइनेंस में पीएचडी। मतलब ये छोड़ो यार, बीसीसीए क्लियर करना है बस बाय होप और बाय ग्रुप। मेरे इंटरव्यूज नहीं है, मैंने एसीसी क्वालिफाइड है, उनसे बेसिक फाइनेंस के क्वेश्चंस, although you are ACC affiliate or member whatever the case may be, basic question नहीं करता। तो हम खुद हमें देखना पड़ेगा अपने अंदर। यस प्रॉब्लम्स हैं, मैक्रो लेवल की भी प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ डिनायल नहीं है, लेकिन माइक्रो पर्सनल स्टार्ट यहीं से होगा। हम बोलते हैं यार ये सब सही कब होगा, हम ये कभी सोचने के लिए नहीं हम सही कब होगा। हमारा सही होना, हम तो पहले मार्केट तो सही हो जाए, पहले इकोनॉमी तो सही हो जाए, पहले एजुकेशन। हमारी एजुकेशन सही है, जो हम पढ़ के लिए वो सही था, जो हमारा नॉलेज बेस है वो सही है, तो हम अपने आप को क्रिटिसाइज करने के लिए तैयार नहीं है। सारी दुनिया की वी आर बेस्ट क्रिटिक्स, वी आर बेस्ट एंड वी आर बेस्ट एट क्रिटिसिज्म। आपको क्रिटिसाइज करना यार, कोरोना वायरस से सब डॉक्टर बन जाएगा। अरे यार मतलब एक दफा एक साहिबा मेरे सामने थी, वो अपनी बीमारी दिखाने के लिए डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर बोलती है ये डॉक्टर के अपने आपको कहाँ से पता चला? फेसबुक पे देखा। तो फेसबुक से इलाज करवा लेती, यहाँ पर क्यों आ गई? अभी ये तो हमारा लेवल हो गया। और कुछ होता है, आप क्रिकेट का मैच हो रहा होगा तो सारे प्लेयर्स होंगे, कुछ हो रहा होगा हम उसके अंदर एक्सपर्ट हैं और टीम्स बनाने लग जाएंगे। मतलब ये तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, हमें क्रिटिसिज्म हम वी आर बेस्ट एट इट, इससे हमसे शायद हो सकता है इसमें कोई अच्छा भी ना हो। एक तो है क्रिटिसिज्म फर्स्ट से क्रिटिसिज्म रिमोट एक्शन। अरे हमने अपने एंड पे क्या लिया, पहले अपने आप को मैंने तो लिया, आप पहले आपसे स्टार्ट करें। मैं आई वुड नॉट डिस्क्लोज कि मैं क्या ये क्या कर रहा हूँ, ये जो मैं कर रहा हूँ। आर यू गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट फ्रॉम दिस? नो, फ्रॉम दिस फ्री में कर रहे हैं ना। Is your initiative or your organization's initiative? Yeah, organization क्या होती है? What is organization? It is group of people. ठीक है? अच्छा, ये भी हो सकता था कि मैं आता, कि 5 लाख रुपए का कॉम्प्लीट करता, क्यों? मैं नहीं हूँ। अभी हम जो कुछ कर सकते हैं, obviously, इसके अलावा क्या कुछ कर रहे हैं उसको मैं, लेकिन हाँ बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं। अब ऑफिस में बैठ के भी जो आइडियाज होते हैं कि भाई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन केस आपको हर थोड़े दिनों बाद इनिशिएटिव को क्या होता है,
that is for the good of the market in general. Yes, मैं ये नहीं बोल रहा कि हम रेवोल्यूशन लेकर आने जा रहे हैं, नहीं यार, अपनी कैपेसिटी में रेवोल्यूशन का सोचो नहीं, अपनी कैपेसिटी में जो होता है ना वो तो कर लो, रेवोल्यूशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सब लोग अपनी कैपेसिटी में काम करना शुरू कर देंगे, रेवोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली जितने भी एससीसीपी और सीडीसी एनसीसी के लिए जितने भी मेजर्स ले रहे होते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है। मेरी एक स्लाइड पे शायद था भी कि पीएस6 के पास एक कंपनसेशन फंड भी है, ठीक है। इसी तरह एनसीसी ने भी अराउंड 3.6 बिलियन अपने पास रखा है। किसी चीज के लिए रखा है कि अगर जब कोई भी इन्वेस्टर भाग जाता है, जो ब्रोकर भाग जाता है, एज सिक्योरिटीज का आपने किसी के नाम सुना होगा कि वो मूव करेगा, एमआर सिक्योरिटीज, मतलब आई एम नेमिंग देम बिकॉज़ दे आर इन द न्यूज़, ठीक है। और वहां पे लोगों की मिलियंस ऑफ रुपीस की सिक्योरिटीज जो थी और वो लोग लेके चले गए। अब उसका इम्पैक्ट तो आया बाद में, मतलब ये सब चीजों पे। तो आपके प्रोडक्ट्स, ये आईएस अकाउंट की इंट्रोडक्शन का भी मकसद ये ताकि आपकी सिक्योरिटी सिक्योर हो जाए, ठीक है। आगे जो मॉडल्स आ रहे हैं उनमें भी, जैसे कम्युनिटी का डायरेक्ट फंड मॉडल, तो उसमें भी यही है कि ब्रोकर के पास से आपके अगर एसेट्स जो सेग्रीगेट हो जाएंगे या उनकी प्लेसमेंट कुछ इस तरह हो जाए कि वो मोर सिक्योर, इट शुड बी इन अ मोर सिक्योर वे, दे आर प्लेस्ड कि उनके ऊपर ऐसे कंट्रोल्स हों कि वो उसको मैनिपुलेट ना कर सके। जैसे बताया मैंने कि वो उस अम्ब्रेला में तो आते हैं एसेट्स उसके पास, लेकिन वो बाय लॉ ऐसे नहीं बेच सकता। सेक्शन 24 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सीडीसी एक्ट का, सीडीसी रेगुलेशन का जो 24 है, वहां पे जो उसकी क्रिमिनल मिसहैंडलिंग पे उसके ऊपर डायरेक्ट क्रिमिनल ऑफेंस है। और आप जो मार्केट मैनिपुलेशन का पूछ रहे थे, दैट इज आल्सो क्रिमिनल ऑफेंस। वहां पे जब उसकी क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है तो वहां के केसेस पे दोस हैज बीन टेकन टू कोर्ट, उसकी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। मेरे 2 करोड़ रुपए कैश उसके पास पड़े गए थे, और कितने करोड़ रुपए इसके वो उसमें उसकी चलाई गई थी। अच्छा, वो एडवोकेट साहब उसी को भी आपने Jackson, which questions are only 10% रिटर्न दे दो, उसमें सब सही आपने आउट ऑफ मार्केट पैसे, आउट ऑफ मार्केट पैसे लिए उससे आसान से करेंगे। हाँ बहुत आप उसको अच्छा से questions complete हो गए। आपके पास रेवेन्यू सारे आपने सक्सेसफुल किए, ठीक है। जरूरत है नॉर्मल स्टॉक में जो इशू आ रहा था इसके बेसिस पे जो जैसे हम क्लोज आउट करवाए, बेसिकली रीजन टॉप पे इन्वेस्टर्स थे उन्होंने मान लिया वो बहुत सारी चीजें वो एक पॉलिसी का तो मैं छोड़ के बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारी चीजें लेट्स नॉट कुछ ऑनलाइन क्वेश्चंस भी हैं काफी सारे। लेट्स आंसर देम। Yeah, I think Jackson, आपकी presentation से था, how much do brokers charge? Are the charges standard or vary from one broker to another? Shahbaz Makhdoom is asking that. Like there is some there is one SCCP has standardized those slabs, लेकिन वो उसके minimum slab जो है ना वो define कर दिए। Okay. And it depends on products to products, like futures में they have to roll over, तो उसके ऊपर कमीशन जो है वो जनरेट होते हैं। It depends on the how much trade you do, and अगर odd lots में है तो उसका obviously। अच्छा, do you have any tools to identify double books or any way of identifying illegal deposits? Danish is asking. Danish Raza. Do you have any tools to identify double books or any way of identifying illegal deposits? Okay, there it's segregation, mainly segregation of assets जो है उसको cater करते हैं P6, which is required under P6 rule book that that every broker has to segregate his own assets, like his securities and the securities of the clients. He has to segregate them, keep them segregated, as well as they can just report them accordingly, and to keep the keep
they have to match their liabilities. The liabilities they have in the form of trade payables, because deposit is a liability of the brokerage house, same as the case of bank. So they used to reconcile the amount of cash deposited along with the trade payables, like liabilities, how much asset of clients they hold, and it will be equal to this, the liabilities they are maintaining against those assets. जैसे आपके पास बैंक में अगर आप कैश जमा करवाएं बैंक में, तो at the same time that cash becomes the it will reflect in the assets, वो ऐसा और लेकिन साथ डिपॉजिट में उसकी इक्विवेलेंट लायबिलिटी की स्टैंड करेगी. Agreed? Okay. So there is a reconciliation in that. और इसके अलावा through inspection and there is also a joint inspection team has been formed with CDC, NCCPL, and P6. The members came from these organizations, SROs, and they do conduct routine inspections, and at times the SCCP is also doing off-site reviews, and also if there comes any clue, because double books is something when it comes to light when something happens. Something like double books in this industry. I just want to give you a view. What are double books? या जिसको आम जुबान में कहते हैं डब्बा का. Like this is a term that is being used. तो इसमें क्या होता है कि कुछ लोगों से ब्रोकर डिपॉजिट लेते हैं. They will not invest in the stock market, but use those funds for their own investing or for their own stock trading activities. At the back end, उन सारे investors को के साथ उन्होंने कोई agree किया होता है कि we will give you 3% return, 5% return. So in a form, they are running a house within a house. ठीक है, उसके अंदर आपने एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल अपने पास एक फाइनेंसिंग लेके आप अपनी ट्रेडिंग जनरेट करो. और जब स्टॉक अगर जैसे स्टॉक मार्केट नीचे जाती है और वो रिटर्न उनको नहीं दे पाता, ठीक है, then people start complaining SECP, PSX के इसने तो हमारे साथ ये एग्रीमेंट किया था. Then it comes to light that he is maintaining double books. Double books on face of it नहीं नजर आती, but there are several indicators जो कि SECP ऑफसाइट रिव्यू में देखता भी है. वो जो उसकी इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन को रिव्यू डिफरेंट सेग्रीगेशन है और डिफरेंट मोड से जो इंफॉर्मेशन आती है SECP के पास, we review that, and in case there is something identified, a red flag has been raised by the offsite review, then that area will be particularly reviewed or investigated. AMCs है, वो भी बेसिकली एक तरीके से इन्वेस्टर्स को एक यूनिट्स प्राइस क्योंकि अगर जितना मार्केट से बेहतर इनका पोर्टफोलियो आउट परफॉर्म कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसको एक तरीके से सर्टेन रिटर्न मिल रहा है. तो वो भी अगर हम देखा तो वो भी AMCs एक तरीके से इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रही है. The double books is something कि एक बुक आपकी ऑफिशियल है और एक अनऑफिशियल है. AMCs जो बनी वो डबल बुक्स नहीं होता. वो डबल बुक्स नहीं होता है, वो डेली बेसिस पे नया निकालते नहीं. हैं. तो उसका उनका तो गेम भी कुछ और है. उसके अंदर डबल बुक्स का कोई सीन और आप फंड यूनिट्स परचेज कर रहे हैं ना, यू नो कि दिस इज द फंड और इसके मेरे ये नहीं नहीं है. नहीं है, ट्रस्टी होता है पर सारे लेकिन रेगुलेटेड हो गया एक तरीके से काम कर रहे हैं. डबल बुक्स का डबल बुक्स क्या कॉन्सेप्ट है? कहां पर होगी? नहीं मैं यानी कि बेसिकली डबल बुक्स का हम ये कॉन्सेप्ट कर लेंगे. अभी अब ब्रोकर है तो बेसिकली उसने इंडिविजुअल इन्वेस्टर को बोलते हैं मेरे पास एनालिसिस करेंगे. ठीक है, एग्जांपल और वो बोलेगा वो सर्टेन मार्केट में मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करो, वो सर्टेन इसका इसकी इन्वेस्टमेंट आप देखते हैं. ब्रोकर को चाहिए कि हर महीने स्टेटमेंट दी. वो अपनी एक अलग उसने स्टेटमेंट दी देगा क्योंकि उसके अंदर उसने रखे हैं कि इसके शेयर सब कुछ सीरीज अकाउंट में बुक्स में दिखा है, अपने लेजर में दिखा है उसके पास शेयर हैं, लेकिन एक्चुअली शेयर सारे अपने पैसे उसके लिक्विडेट करके. That's why CBC used to sell you. इसीलिए हम स्टेटमेंट देते हैं, मंथली बेचते हैं. देखो Because we have seen the cases कि manufactured CBC statements भी सबमिट हुई हैं. लेजर ऐसे स्टेटमेंट में कि जी आपके पास ये सारी सिक्योरिटीज है. When we investigated that, वहाँ तो कुछ नहीं था.
वो शेयर्स उसने कहा कि हमने ट्रेड नहीं किए, then we go, हमने सबसे पहले देखा था ना कि पहले ऑर्डर प्लेस करना होता है, तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए ये भी रिक्वायरमेंट है कि टेलीफोन रिकॉर्डिंग या किसी मोड पे वो ऑर्डर आया, वो ऑर्डर एग्जिस्टिंग, ठीक है। आपके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में एक चीज मैंडेटरी की हुई, आपके सेल फोन नंबर्स, ईमेल एड्रेस, ये मैंडेटरी, सीडीसी के अकाउंट में भी ये चीज आ रही थी। तो वहां पे उस अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में एक इन्वेस्टिगेशन में ये भी देखने में आया कि वो वहां से उसने चेंज कर दिया account। वो जी अपडेट कर दिया, अपडेट करके और वो चेंज कर दिया, और अब जो इंफॉर्मेशन ट्रेड की जाएगी वो तो सेल नंबर पे जाएगी, तो वो वहां से वहां मूव कर गया। सो इसलिए आप यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव इन दिस मार्केट कि आपके जो पर्टिकुलर्स गए हैं, आर यू रिसीविंग दोस प्रॉपर इंफॉर्मेशन। ये सारे अलर्ट्स का मकसद ये होता है कि ऐसा ना हो कि आपकी आईडी से somebody else start trading, और आपकी आईडी से वो ट्रेड करके वो लॉस कर दे, बाद में आप ब्रोकर को कहें या किसी और को कहें। इसलिए कहा जाता है कि अपने पासवर्ड्स भी ना शेयर करें। पासवर्ड का तो एक बहुत सिंपल रूल है जो मैं अपनी ट्रेनिंग के अंदर कि whenever you share a password, it ceases to be a password. It's a public property. पासवर्ड शेयर हो गया तो पास में वो अच्छा जी, दानिश रजा का नेक्स्ट क्वेश्चन था, why are there no volumes in CSF? because they don't want to trade in CSF. CSF, yes. Is there any conflict of interest in trading and clearing members? Trading and clearing, दोनों different capacities and trading is, इसीलिए अभी नई ब्रोकर रेजिंग जो इंट्रोड्यूस हुई है उसके अंदर ये होगा, अभी तक इम्प्लीमेंट करके होना है ये कि क्लियरिंग इज अ रिस्कियर जॉब, कस्टडी इज इवन रिस्कियर जॉब। तो आप कस्टडी को कम से कम ब्रोकर्स तक महत्व रखेंगे जिसका पेड अप कैपिटल 5 मिलियन से ऊपर होगा, और इसी तरह से क्लियरिंग भी वो कम से कम करना होगा। एक होगा जो सिर्फ ट्रेडिंग करेगा, वो आप उसके क्लाइंट्स को ट्रेड करेगा और उसका काम करेगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है कि ट्रेडिंग ज्यादा लोग कर सकें और क्लियरिंग और कस्टडी को कम से कम लोगों के पास। Why does every broker have different commission rates? Is there a limitation or rules for minimum and brokerage maximum commission? Okay. Out of topic questions, Usman. Can you explain a bit more on on derivative market products? Yeah, I think. इसमें डेरिवेटिव ये DCF जो डिलीवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो है, और उसमें जो है उसका 30 डेज का टाइम है, और लास्ट वीक में जो है वो उसका रोल ओवर होता है, और जब वो मैच्योर हो जाता है तो उस पर T+2 की सेटलमेंट हो जाती है। When is the new broker regime coming? Wakar Alam is asking. Broker regime. अभी ये कहना कब वक्त होगा तब ये इम्प्लीमेंट होगी। ठीक है जी, thank you so much everyone for all the online attendees. So apologies for taking extra time from your schedules. We are closing the webinar and hope you have a nice day. Thank you.